आज मैं सीखने वाला हूँ कलर थ्योरी। पूरी कलर थ्योरी तो नहीं सीख पाएंगे एक वीडियो में, लेकिन फिर भी जितनी सीख पाया मैं, आज का पूरा दिन मैंने कलर थ्योरी में ही देना है। मेरा नाम है आमिर और मैं नई नई चीज़ें सीखने वाला हूँ इन कुछ दिनों में, तो आप भी मेरे साथ सीख सकते हो। और मैंने ये अपना पैड ले लिया एकदम नया, इस पे मैंने पूरा लिखना है जो जो मेरे को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेंगे, जो भी है। नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। और बाकी चीज़ें जो हैं, मैंने प्लेलिस्ट पहले से तैयार कर ली है, एक छोटी 8 वीडियोस की प्लेलिस्ट, क्योंकि ज़्यादा लंबी पहली वीडियो नहीं करूँगा मैं अपनी। और ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल रॉ है, बस फ़ोन का ही एक फ़िल्टर लगाया है मैंने जिसका नाम है इलस्ट्रेटर। और ये जो फेस पे ज़्यादा क्लीन दिख रहा है, ये है लाइट की वजह से है और फिल्टर की वजह से है। लाइट मेरे सामने लगी हुई है, तो चलो सीखना शुरू करते हैं। हाँ, ये साथ में मैं दिखाता भी जाऊंगा एक छोटे एरिया में, तो आप वो भी देख सकते हो। वैसे ये रिएक्शन टाइप की वीडियोस जैसे बनती हैं वैसे ही मैं भी बना रहा हूँ, लेकिन ये रिएक्शन वीडियो नहीं होगी। तो इसमें हम सीखेंगे साथ साथ सभी। मैं बस ये अपने आप को एक रूटीन में रखने के लिए ये वीडियोस डालूँगा रेगुलरली यूट्यूब पे, और सीखता जाऊँगा। मेरे कुछ 21 प्लान्स हैं, वाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं मैंने, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में, उसका भी मैं इसी नोट्स के साथ फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूँगा। नोट्स मिल जाएंगे आपको उसके भी। तो वो कुछ 21 चीज़ें हैं, वो आप देख लेना कौन कौन सी है। हाँ, उनमें से कुछ चीज़ों को ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ हल्की फुल्की हैं, तो शुरू करते हैं। You're about to watch the most important information I've ever said on this channel relating to colour. I've actually split the video up into different sections for easier viewing, and the first section is a kind of before and after section where we add colour to mediocre design templates. So follow along and have yourself a great day. And here is the first design, which is based around a gym or exercise poster. Now, as you can see, this poster is in grayscale at the moment, and we want to add some colour. Now, I want you to think of the emotion of the design itself and what it's trying to convey and what's the message that's being presented. This is how you choose colour. You want to evoke certain emotions, and so you can relate back to the colour psychology. So let's have a look at 3 different examples of 3 different colour schemes on this design. Which one of these do you think works the best when it comes to a kind of exercise or changing your life sort of colour scheme? Try and ask yourself or question, why would this colour work? So here are some keywords that relate back to the colour psychology of the particular colour scheme. For orangey kind of yellows, we have energetic, excitement and change. Red can evoke danger, passion or a warning. And green can relate back to natural, tranquility or healthy. So when you want a design to relate back to a change of lifestyle or a change of anything and some kind of energetic movement, orange is always going to be a very good choice for this kind of design. Also, when you consider the design here has very energetic lines, angled straight lines, that plays back into the colour psychology here. So for the second choice here, we have another grayscale design. And this is just a quick advert that will be promoting skincare or body creams. And again, we are going to look at emotion or connotations of a colour scheme. But when you are trying to sell or advertise or design something based around skincare products, specifically aimed at women, what colour schemes would you go for? मेरे को लगता है कलर थीम में नेचुरल टोन होनी चाहिए. For this example, I'm going to show you the finished design right now, and that is pastel kind of skin tones. As you can see, we have some darker skin tones here, and then we go into pinks and also a really pale colour here. So why are these synonymous with beauty products or skincare products? There are some very good reasons why these kind of colours are used on these products. Pastel colours evoke a kind of openness and a relaxation feeling when they're viewed. They're very peaceful and soft colours, which is great for selling things such as beauty products. As you can see on the right, the saturation has been upped a lot and it's too kind of aggressive for this style of design. Also, using pastel skin tones does relate back to the product itself, which is trying to sell something that will make really healthy,
and really beautiful skin. So these are the kind of things you do need to keep in mind when you're designing something. You need to relate back to the product, the message, and the overall feeling. For this web page here, I've gone ahead and I've actually colored in 4 aspects of the design in a kind of goldy orange color. The rest is grayscale at the moment, but we're soon going to change that. And actually I'm going to give you 3 different examples again, and you should try and work out which one works the best for the design. So here are your 3 options to choose from. Which design looks the most functional from a color scheme standpoint? And can you actually answer why it works? यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थर्ड वन जो है वो जैसे वेजिटेबल मार्केट होती है वैसा है थर्ड वाले के लिए। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अच्छा कलर है, तो इस केस में सेकंड वाला मेरे को लगता है कि वो हम बिल्कुल नहीं चूज करेंगे। देखते हैं। This option is less to do with emotion and is more geared towards a graphic design principle in terms of color schemes. So one really useful method you can apply when choosing colors is to utilize contrast. And one really neat way to do that is complementary colors. Now these are colors that are opposite each other in the color wheel, and of course these are contrasting. This renders a design impacting, but also these colors are visually appealing when put together. And this is something you might want to choose for your design when you pair it with things like emotion and the message. In 1974, K.W. Jacobs demonstrated red to be more stimulating than green, and green more stimulating than blue. According to this study, a person left in a red room is constantly stimulated with heightened awareness and elevated heart rate. And in 1981, Richard Kuhler showed in studies that colour had a great effect on EEG readings and heart rate, as well as emotional perceptions of objects. So colour does have a direct physical response on our bodies and can actually play on our emotions. But here's the first very important thing you want to keep in mind as a designer. It isn't necessarily the colour that's important. Brightness and low saturation creates a soft feeling, whereas dimness and high saturation creates a hard or strong feeling. Also, weaker contrast and weaker saturation conveys calmness as opposed to a stronger contrast and saturation which convey activity. It's why pastel colours are often given to baby things or are considered by some to be calming, because they lack saturation. And as you can see, things do start to become a bit tricky when it comes to the use of colour and colour theory, but only if you don't properly absorb the content in today's video and potentially you do take some notes. Let's just say, hypothetically, we're making a design for an insurance company. Now it could be a logo, a brochure, whatever it is. Using this knowledge, you might then choose 1, low saturation, and 2, weak contrast. These decisions will convey a sense of calmness, which is great for conveying to the target audience that they're in safe hands, and that yes, they will purchase 100 years of your finest insurance. Knowing the message or feeling you want to send out with your design allows you to then select things like saturation, contrast, and brightness. But let's go deeper with color theory. अभी जो इन्होंने इंश्योरेंस वाला एग्जांपल दिया वो बिल्कुल करेक्ट है। LIC जो हमें एड्स में दिखाया जाता है वो उसमें ब्लू टोन होती है, जो कि एक काम कलर है, लेकिन वो हाईली सैचुरेटेड नहीं होता है, वो ऐसे वीक सा ब्लू होता है। आप LIC का अगर फ़ोटो देखोगे, मैं फ़ोटो दिखा दूँ। यह है उनका लोगो, ये देखो ब्लू कलर है लेकिन ये ज़्यादा डार्क नहीं है। यहाँ पे उनका एड कैंपेन देखो, ये डार्क नहीं है, ये लाइट कलर है जिसकी सैचुरेशन कम की गई है। उसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, आपको एक कामनेस देता है। और जैसा कि उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस का मेन मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी, तो वो ये ऐड अच्छे से दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये देखो, ये पर्पल वाला पिक्चर है, ये पता नहीं कहाँ से आया है, लेकिन ये भी एक पिक्चर गूगल पे अपलोड है। यहाँ पे ये थोड़ा डार्क हो गया है। अब इन दोनों में फ़र्क देखो, आपको ये वाला ज़्यादा काम लगेगा, ये वाला लेस काम लगेगा, ये उतना काम है भी नहीं है।
even yet still. In common color theory, you've probably heard this 1,000 different times. The color red relates to danger, but also to passion and lust, blah blah blah. Yes, to some extent this is true, of course. But get this, we already know that from the study mentioned earlier that red creates a heightened sense of stimulation. Being stimulated like that does a few things. Some of those things include changes in breathing patterns, pulse, blood pressure and muscle tension. Okay, cool, but where does that even fit into graphic design? So when people are at this level of stimuli, they are more likely to recall something and to form memory loops. It's like mini trauma, and our brains are designed to latch onto trauma from a survival point of view. Many brands and many designs use red or similar colors to grab attention and to create hard, solid memories to their audience. Think of brands like CNN or Target as example. So for the UI and UX designers out there, HubSpot ran a study on the effect of switching website call to action buttons from green to red, and they got some very, very conclusive results. The red button outperformed the green button by 21% in terms of click-through rate, which is pretty major in the business world. यहाँ पे आपको पता चल गया कि वेबसाइट अगर कोई डिज़ाइन कर रहा है तो उसमें कलर थ्योरी में रेड बटन डाउनलोड्स पे होता है या इंस्टॉल पे होता है, रेड बटन हमेशा होता है मैक्सिमम टाइम, तो उसकी वजह से वो क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाता है। तो वेबसाइट्स जिन्होंने बनाई है या जिनके सॉफ्टवेयर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, या जिनकी भी वीडियोस हैं कुछ भी, तो उनको फ़ायदा होता है इस चीज़ से। तो इसीलिए मैक्सिमम वेबसाइट पे आपको रेड कलर दिखाई देगा। जैसे कि स्टॉप बटन भी मैक्सिमम टाइम रेड होता है, तो वो भी यही कन्वे करने की कोशिश करता है कि उस पर ज़्यादा जल्दी से क्लिक होगा। अगर ग्रीन बटन होगा उस पर लोग सोचते हैं पहले, फिर क्लिक करते हैं, इसीलिए रेड लाइट्स होती हैं। रेड में हमें थोड़ा कम सोचना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो हमें एक हाई टेंडेंसी दे देता है कि हम रेड को ज़्यादा क्लिक करें वेबसाइट्स पे। या फिर आप नीचे यूट्यूब की जो लाइन देख रहे होगे अभी, तो उसमें भी रेड है, उस पर भी हमें क्लिक करने की ऐसे एक हिसाब से चूल मची रहती है कि हमें उस पर क्लिक करना ही करना चाहिए। स्टिमुलेटेड हो जाते हैं हम लोग रेड को देखते ही। अभी यहाँ पे अगर मैं ये देखो, ये वाला रेड कलर एकदम बाहर आ रहा है, इसमें ब्लैक कलर आजकल यूट्यूब पे आपको बहुत दिखेगा, क्योंकि ब्लैक कलर अभी एक लग्जरी फील दे रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो ब्लैक कलर इसलिए यूज़ करते हैं बहुत सारे क्रिएटर्स। यहाँ पे आप एनीथिंग की वीडियो देख लो, इसमें भी रेड कलर यूज़ हो रहा है। जितने भी रेड कलर की थंबनेल देखोगे आप, वो एकदम अलग दिखते हैं बाकी सबसे। Color theory can be fiddly and it can be precise at times. For example, combining a vibrant red and green together can end up being unpleasant to the eye. But if you lighten the red to a soft pink and then make the green less saturated and slightly darker, it then becomes a decent color palette, one that is immediately memorable and visually appealing to use. There is a spanner I could throw into the works right here. Culture. Culture plays a vital role in how people feel towards color. Red typically denotes love in the West. In Japan, however, red is associated with wrath and anger. There are many different examples of how different cultures use and feel towards color, but here's yet another spanner to throw into the works. Age and gender. Studies have shown that women tend to prefer softer, more pastel colors, whereas men prefer bolder colors. It's important to note that this is just an average and won't apply to everyone in a group. But when making designs and decisions on those designs, we aim to kind of appeal to the majority of a target audience and not just the minority. This should tell you that you absolutely must know your target audience in terms of their age, gender, location, what they like and dislike, and what you want them to feel with your design. And for this first section, you're going to want to write down words linked back to how you want to make the viewer of your designs feel. And don't worry if you're kind of lost, it is going to make sense later in today's video. Let's take a look at an existing example so you get the idea. So this landing page wants to make the viewer feel like they are in good hands. Notice how it says, "We help you get more leads," emphasis on that word help.
Blue colors are strongly linked to a sense of security, and it's why most financial-based brands use blue in their branding. ऐसे ही आप जिस वक्त LIC का ऐड देखोगे तो लास्ट पे आता है मार्केट आर सब्जेक्टेड टू योर रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको देखोगे वहाँ पे रेड कलर यूज़ किया जाता है। पूरी ऐड में आपको पूरा ब्लू शेड ऐसे अलग अलग कलर दिखाएंगे, लेकिन रेड नहीं दिखता है मैक्सिमम टाइम्स। मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि मैंने रेड देखा है, तो ब्लू ही दिखता है। तो यही यहाँ पे आपको एक सिक्योर फील करवा देता है ब्लू कलर, कि आप अभी सिक्योर हो। लेकिन लास्ट पे वो जो होता है वो एकदम से बहुत सारे लोगों का क्या बोलते हैं रोक देता है, उनको सोचने में मजबूर करता है कि उनको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर LIC मेरे हिसाब से उसको कहीं पे छुपाने की कोशिश करे, वो मार्केट आर सब्जेक्टेड रिस्क वगैरह वगैरह, तो उसको उनको कहीं छुपाएंगे तो उनकी मेरे हिसाब से सेल्स बढ़ सकती हैं अभी भी, क्योंकि मैंने भी कई बार उनकी एड्स देखी है। लास्ट पे जिस वक्त मार्केट आर सब्जेक्टेड रिस्क आता है तो मैं भी छोड़ देता हूँ, ऐड स्किप कर देता हूँ। पूरी ऐड में आप MS धोनी को देख रहे हो, म्यूचुअल फंड्स देख रहे हो, बड़ी बातें कर रहे हो, उसके बाद बड़े बड़े घर दिखा रहे हो, लेकिन लास्ट में वो जो डिस्क्लेमर है उसकी वजह से बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है व्यूअर्स पे, उसको कहीं और उनको लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। But a light and a soft blue like this one here is also quite calming. So the words you might write down relating to how you want the viewer to feel are safe, secure and calm. Notice however that we also have hints of orange on our design. Orange is a colour linked to action and movement, and so this will help to usher the viewer to take action and click the link. So the other feeling you want the viewer to feel is a need to take action, simply because the whole point of this design is for the viewer to click that button. We want the colours to make the viewer feel a certain way when looking at the design. Sometimes there'll be someone who pops up in my comment section or here on YouTube and they will say something like, oh, colour psychology is rubbish and it's completely useless. This is a clearly ignorant standpoint because psychology, especially in terms of colour, is used by pretty much every major brand out there. Not to mention that colour psychology is something ingrained into the human brain and also into cultures around the world. So to say that colour psychology is rubbish or useless is very, very ignorant, and it's just redundant, to be honest. Let's look at another quick example for this section. This design wants people again to feel energetic and to take action. It says, accelerate your blog's growth. That sentence not only suggests the viewer to actually do something right now, the word accelerate is in there, which in of itself is very energetic. And again, a strong bright colour of yellow is used in this design, and this time it's the main colour, unlike the touches of orange we saw earlier. Yellow is linked to energy and positive change, much like orange. And this is no coincidence, it's colour theory and psychology. The next step is to look at your design's personality, and again we want to write down those words that best describe the personality of your design. Let's look at this design again, and there is a lot of white open space suggesting a more minimal and a more clean design. The fonts used and the style of use is quite friendly, especially considering we have a little message in handwritten text next to our model. For this design I would write down clean, minimal and friendly, and add these below the first section of words that we've made. We want to build an overall idea or concept of our design with these keywords. From here it's a case of just taking your words and thinking about colour psychology. So pop online and take a look at what each colour signifies from a psychological point of view, and then match up your keywords to 1, 2 or 3 colours. So this is where the fun begins and where we start to experiment with our colour schemes. I'm sure you've probably heard of Adobe Color, which is a great free tool for creating color schemes. But there is another website you might find useful, and I think I want to share that with you guys. And it's Sessions College Color Calculator. Let's just say, for example, that your research has pointed you in the direction of a friendly and a natural, organic design. So you want to go for a muted, kind of tame green. This is your starting color, this is your base color. You can then cycle through different colour harmony schemes such as complementary, monochromatic and so on. Always start with that base colour from your research and then explore what else can work and then what might fit into your design. For example here, the green could be the majority of my design, i.e. that main colour,
and then maybe this pink or this orange could be the call to action focal points and other design elements. So this is how we do it. We first want to think about the viewer and how we want them to feel with our design, and then we think about the design's personality before methodically going about the color scheme itself. Sometimes when you're lucky, the brand or the client will give you a color scheme, and then that means most of the work is already done for you. But I hope you see how design can be a methodical step-by-step process, and yes, it's creative, but it also requires some, methodical thought as well. One thing you might not know about Illustrator is that if you hold down Shift and click the color menu, a different menu is actually presented to us. Now I'm currently working in RGB, so I do have the relevant RGB sliders. But if I then hold down the Shift key again and click and drag, notice that I'm actually dragging all 3 sliders at the same time. This is actually a quick hack to add tints and highlights to your color, straight from the RGB slider panel, which is pretty neat. Also, when we take the color window, something that is often overlooked by some people is the ability to complement a color straight from this panel. This of course refers to the complementary color scheme where opposite colors on the color wheel are paired up together. So for example, if I take this blue here and I use the complement button, we should get an orange. Another nifty and time-saving tip in Illustrator is a way to change an entire design color scheme with just one click. Make sure you select everything you want to change, and then come to the Edit Colors menu. Here we have a lot of color options such as grayscale, saturation, and so on. And as you can see, I now have a totally grayscale selection with just a single click. One of the most powerful ways to use color in Illustrator is to focus on global colors. To use this option, open up the swatches window and then select the base color that you wish to use as a global color. Then click the top right menu and add a new swatch. Make sure the global color box is checked, and once you've made the swatch, you will notice that the icon has a white triangle in the corner. This is now a global color. This means that whenever you use this specific color on your project, and then you come into the menu and you edit it or transform it into a different color, it will actually change across your entire design simultaneously. Now pretty much everybody has heard of color psychology and the rules attached to that psychology, but do these color rules really mean anything in business and branding? Well, yes they do, but it can get quite confusing. Let's start with a simple rundown of the main colors for logo designs and how they can be received by people from a psychological point of view. Orange is an invigorating, playful color, and it's one that will make your logo stand out from the crowd, and it's often used to represent a positive change or action and energy. अब अगर ऑरेंज की बात की जाए यहाँ पे, तो हमारे पास इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है KTM। जो KTM कंपनी है, उसने अपनी बाइक और जो नई गाड़ी उनकी एक्सपो आई है, उन दोनों में उन्होंने ऑरेंज को थोड़ा थोड़ा डाला है, जिसकी वजह से वो बाकी सारी गाड़ियों से बिल्कुल अलग दिखती है। इस बात को छोड़ देते हैं कि वो कौन लोग उस गाड़ी को ज़्यादा खरीद रहे हैं क्या है, लेकिन उस गाड़ी की पावर वगैरह वो अलग चीज़ होगी, उससे भी वो गाड़ी स्टैंड आउट करती है। उसका डिज़ाइन भी हाँ थोड़ा स्टैंड आउट करता है मार्केट से, लेकिन सबसे जो ज़्यादा स्टैंड आउट करती है KTM। अगर थोड़े दूर से भी आप उसको देखोगे तो उसका वो ऑरेंज कलर है जो उसको अलग दिखाता है बाकी सारी गाड़ियों से। बाकी गाड़ी में आपको ज़्यादातर कलर ब्लैक दिखता है, बाइक्स की बात कर रहा हूँ अभी, तो ब्लैक दिखता है या ब्लू दिखता है, तो कभी कभी केसेस में रेड दिखता है। तो जो ऑरेंज है वो किसी और बाइक में नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है, मैंने अभी तक नहीं। हाँ, सुपर बाइक्स में हो सकता है, उसमें आपको चॉइस मिल जाती है, लेकिन सुपर बाइक्स इतनी होती ही नहीं है। तो स्टैंड आउट करने के लिए, वैसे भी सुपर बाइक को स्टैंड आउट करने के लिए उसका सुपर बाइक होना ज़रूरी है। तो
ऑरेंज कलर आपको स्टैंड आउट करवा सकता है। और यहाँ पे बताया है उन्होंने पॉजिटिव चेंज और एक्शन, इस पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि इंडिया में, क्योंकि ये बाहर की बात है, बाहर थोड़ा अलग होता है, यहाँ थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे मेरे को ऑरेंज पॉजिटिविटी से तो अभी तक दिख नहीं रहा है। वैसे फिट जी देखा जाए, अगर आईआईटी की जो तैयारी करवाते हैं या नीट की जो भी है साइंस वाली स्ट्रीम्स, वो यूज़ करते हैं और वो थोड़ा अट्रैक्ट कर भी पाते हैं इस कलर से। हाँ, कर पाते हैं। हाँ, और वो एक्शन भी दिखा रहा है कलर। तो ऑरेंज को आप ले सकते हो पॉजिटिव चेंज और एक्शन में, लेकिन थोड़ा लेना ध्यान रख के। Red is the universal sign for excitement, passion, but also anger. Now, like orange, it will stand out from the crowd, but it can be seen as a negative kind of connotation in some cases. It's a colour to be used cautiously. And don't worry, we're going to look at things in greater detail later in the video. This is just a quick rundown of the colours. रोज़ का अगर आप एक गुलदस्ता लेते हो तो वो काफ़ी स्टैंड आउट करता है। अगर आप लिली का लोगे तो वो उतना स्टैंड आउट नहीं करेगा, या आप किसी और कलर का लोगे तो वो उतना स्टैंड आउट नहीं करता जितना रेड कलर रोज़ करता है। तो वहाँ पे वो पैशन दिखाता है। अब मैक्सिमम जगहों पे जो होता है लव इज़ फॉर रेड, तो मतलब वो डायलॉग नहीं है शाहरुख खान का, जब आपको प्यार होता है तो आप पे लाल भी अच्छा लगता है। तो वहाँ से भी ये पैशन बता सकता है। एक्साइटमेंट के लिए जैसे बम्पर ऑफर ये वगैरह एड्स चलते हैं, उसमें रेड को वैसे दिखाया जाता है, टैग लाइन 50% ऑफ वगैरह, तो उसमें भी वो काम करता है। एंगर तो हमने कई बार देख चुके हैं, रेड फॉर एंगर ही हमारे दिमाग में ज़्यादातर आता है, क्योंकि इंडिया की ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो कार्टून देख के बड़ी हुई है। तो कार्टून्स में ज़्यादातर जो कि वेस्टर्न कार्टून्स हैं उसमें रेड फेस फॉर एंगर होता है। तो टॉम एंड जेरी की एग्जांपल ले लो, ऑगी एंड कॉकरोचेस की, तो वो एंगर दिखाता ही दिखाता है, या फिर पेन भी दिखाता है कभी कभी, लेकिन पेन दिखा सकता है। हाँ, If you want to interject a thoughtful, cheerful, and energetic emotion into your brand or your logo, yellow might be the way to go. And again, this colour is very loud. अब आप येलो कलर को देख लो। येलो कलर सबसे लाउड इसलिए बताया गया। आप जितने भी इंस्टीट्यूशन देखोगे या स्कूल देखोगे, उनके बोर्ड आपको येलो कलर्स में दिखाई देते हैं मैक्सिमम। येलो कलर की स्कूल बस, उसकी वजह से भी वो एक स्टैंड आउट करता है क्राउड में, येलो कलर। Green is very straightforward because it represents nature, growth, health, and it can be used in almost any sector of business. अब जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर यहाँ पे बताया कि नेचर और ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। तो आप जितने भी अब ग्राफ्स देखोगे जिनमें ग्रो हो रहा होगी कोई चीज़, ऐसे ग्राफ जो जाते हैं इस टाइप से, तो उन ग्राफ्स में ग्रीन कलर होता है, वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर वही ग्राफ में आप रेड रखोगे तो वो थोड़ा अजीब लगता है। ग्रोथ अभी भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो आपको दिखेगी नहीं। जबकि यहाँ पे तो डाउनफॉल आया है, इतना डाउनफॉल आया है, यहाँ पे रेड हो जाना चाहिए, लेकिन वो पूरा ग्रीन है। ये वाला डाउनफॉल भी आपको लगता नहीं है कि आप क्या बोलते हैं पीछे गए हो, ग्रो यहाँ पे भी आपको लगता है वो ग्रो ही हो रहे हो आप। बाकी हेल्दी के लिए तो ग्रीन यूज़ ही किया जाता है, क्योंकि वेजिटेबल्स से कंपेयर करते हैं हम हेल्दी को, तो वो तो ग्रीन तो हेल्दी होना ही चाहिए। नेचर तो ग्रीन होता ही है मैक्सिमम टाइम्स, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। Blue symbolizes trustworthiness and maturity. Now, you should be using blue if your brand wants to be taken seriously. It's also a color that can be quite calming. अभी यहाँ पे इन्होंने बताया ब्लू ट्रस्टवर्दी दिखाता है। तो आप जितने भी अब बच्चों के कार्टून्स देखोगे उसमें ब्लू कलर कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से वो ट्रस्टवर्दी लगता है। अगर आप मान लो आपका स्काई रेड हो, तो इमेजिन करते ही आपको उतना वो ट्रस्टवर्दी नहीं लगता है। लेकिन जब हमारा स्काई अब ब्लू है तो वो
हमें ट्रस्टवर्दी लगता है कि वो हमारे ऊपर है, लेकिन बहुत दूर है, एक अलग सा डेप्थ दे देता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को। और ब्लू से मैच्योरिटी भी दिखाई जा सकती है, जैसे ऑफिस में ब्लू शर्ट्स होती हैं, ब्लू पैंट्स होती हैं, जो काम करने वाले लोग के आउटफिट्स होते हैं या यूनिफॉर्म मान लो, तो वो ज़्यादातर टाइम्स ब्लू शेड्स में होती है, जो कि हमें मैच्योर भी दिखाती है। तो जैसे बच्चे पहले पेंसिल यूज़ करते हैं, तो उससे बाद हम पेन यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, ब्लू पेन यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे भी हमें एक मैच्योर होने की फील दे पा रहे हैं। यहाँ पे रेड पेन यूज़ करने पे वो मैच्योर हुआ है कि नहीं है वो नहीं लगेगा, वो ऐसे ही लगता है कि कोई क्लाउन लिख रहा है आपकी नोटबुक में। क्यों लिख रहा है? जैसे लड़कियों की नोटबुक्स होती हैं वो काफ़ी डिज़ाइन वाली होती हैं, या फिर सजा सजा कर रखी गई होती है, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं लग रही होती हैं, जबकि आप सिंपली ब्लैक और ब्लू से लिख के भी एक कैटेगरी में डाल के उसको भी अच्छा कर सकते हो। हाँ, हाइलाइट्स जो करती हैं लड़कियाँ, उसकी वजह से वो नोटबुक फिर से एक बार ज़िंदा हो जाती है मरने के बाद। तो वो कमाल उनके दूसरे पेन का नहीं है, वो हाइलाइट का कमाल होता है। तो ये भी आप ध्यान में रखो। Now, purple is feminine, but it also expresses luxury and is often the colour linked back to royalty. So, in short, it's a pretty sophisticated and feminine colour. पर्पल जो है वो एसोसिएटेड किया गया यहाँ पे फेमिनिन, रिच और लग्जरी के हिसाब से। तो आप जैसे देख लो अरमानी का भी लोगो पुराने वाले जितने भी उनके ऐड होते थे वो पर्पल कलर में दिए जाते थे, तो उससे वो ट्रस्टवर्दी लगता था। या फिर आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो आती थी, तो उसको देख लो, वो भी आपको एक लग्जरी फील देती है कि ऑक्सफोर्ड से आई हुई है। वो ट्रस्ट, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का ट्रस्ट, लग्जरी, अच्छे ब्रांड ने बनाया है ऐसा आपको लगने पड़ जाते हैं पर्पल की वजह से। जबकि यहीं पे अगर आप एग्जांपल लोगे येलो या ऑरेंज की, वो ऐसा लगता है कि जो बनाने वाला था उसने डिज़ाइन को ध्यान में रख के ये चीज़ बनाई है, लेकिन पर्पल के केस में वो सीधा लग्जरी पे पहुंचा देता है। जैसे अगर आपने पर्पल गाड़ियाँ देखी होंगी, तो बाकी गाड़ियों से थोड़ी महंगी लगने पड़ जाती है। सेंट्रो ही ले लो, अगर वो पर्पल में आप सोचो उसको, तो कितनी अलग लगेगी। या फिर आपने टार्जन दी वंडर कार देखी होगी, वो स्विफ्ट जैसी ही दिखती है एक हिसाब से। वैसे तो वो अवंती है, मेरे को भी पता है, लेकिन फिर भी वो स्विफ्ट जैसी दिखती है। अब स्विफ्ट को आप इमेजिन करो पर्पल कलर में, तो वो थोड़ी महंगी लगेगी, अजीब लग रही है अभी भी, लेकिन वो फिर भी महंगी लगती है, लग्जरी वो दिखाती है कि पर्पल एक लग्जरी कलर दिखा पा रहा है वहाँ पे। In Western society, nothing says girly like pink does, but it is a lot more versatile than that. And now if pink is a more vibrant neon version of its colour, then this can represent energy and a more modern emotion. पिंक का यहाँ पे बताया है एनर्जी और मॉडर्निज्म। अब जैसे बारबी मूवी देख लो, वो मूवी मतलब जहाँ से शुरू हुई थी वो वहीं पे ख़त्म होगी, यानी कि मूवी देखो या ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे, एक हिसाब से। हाँ, अगर आपने बीच में से कोई पॉइंट्स बीच में से ले लिए हैं तो वो अलग है, लेकिन बारबी का लास्ट प्लॉट कुछ अच्छा नहीं है। जो उसका क्लाइमैक्स होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, वो कुछ नहीं है। वो बस वही है जो रियल लाइफ में आप आसपास देखते हो, और उसी को डाला है और उसको सॉल्व भी नहीं किया, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वो अलग बात है। तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हो कि वहाँ पे आपको वो मॉडर्न दिखाया है कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी थी वो परफेक्ट थी, और उसका एक मेन रीज़न वो पिंक कलर भी था। मैं बारबी लैंड की बात कर रहा हूँ। या फिर आप देख सकते हो, हाँ, आप LGBT कम्युनिटी के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें वो पिंक कलर के हेयर डाई करवाने का बड़ा शौक होता है, तो उससे भी एक मॉडर्निज्म दिखाई देता है, वहाँ पे आप देख सकते हो। उससे बाद
पिंक इतना ऑफ्टन यूज नहीं हो रहा है. Browns will often make your logo appear rugged, masculine, and also serious in nature, but browns are rarely seen in logo design. ब्राउन की बात हो रही है कि लड़कों के शूज़ होते हैं, तो शूज़ यहाँ पे सीरियस टोन भी दे देते हैं, ब्राउन कलर के शूज़, और मैस्कुलिन भी दिखा देते हैं, जबकि ब्लैक कलर के शूज़ ऐसा नहीं करते हैं. ब्लैक कलर के शूज़ आप डालोगे तो वो आपको एक लग्जरी फील देनी पड़ जाती है. Black can be slick, and it's a modern and luxurious color to use on the logo, and it's often used for high-end brands. So that's all well and good, but how can you determine the right color for your logo, and should you even follow these conventions? Well, firstly, you should return to the data and the research that you have on your client's brand. Generating keywords linked to your brand is essential to the color that you choose. Understand the brand and also the typical customer of that brand, and then you can target them with the right colors. Let's look at a famous example, and that would be Cadbury, the chocolate company. Recent studies show that 78% of people who heard about Cadbury on Facebook were in fact female. Knowing this tiny bit of information is so powerful, because what color does Cadbury predominantly use in their branding? If we step back to the color psychology, color theory, purple represents luxury, sophistication, and even royalty. But crucially, it's a very feminine color. So the branding of Cadbury would appeal more to females, which is great considering what percentage of people who engage with the brand are female. But it goes even further than that. In the minds of the consumer, the use of purple elevates the concept of Cadbury as a brand to heights of sophistication, class, and even royalty. Cadbury didn't just randomly choose purple. It was of course a very well thought out and targeted choice. And this is how you should approach your design projects, by targeting people with relevant choices. Just remember that research is king. But then the question arises, should you stick to just one color? Now me personally as a logo designer, I rarely use more than 1 or 2 colors on a logo. If you are a beginner, then yes, it is always safe and an easy bet to stick to just 1 or maybe 2 colors. But then what about Google or even Microsoft? They have many colors in their logos. Yes, these logos for the most part do work. However, the designer who uses many colors should know exactly what they're doing. Going with one color is great for brand recognition and strength. An example here would be Coca-Cola with their red branding. But using multiple colors might be a good idea to stand out from the crowd. The thing is, it needs to be used in a well thought out manner, which often goes wrong for novice or beginner designers. An example here would be the Kraft rebrand. There is a lot wrong with this logo, but the overuse of color is one of those things. Now color can be used to stand out from the crowd in the right way, but again it needs to be thought out and planned. If we take a look at social media, you will notice that many logos or apps do use the color blue. So we have LinkedIn, Twitter, Facebook, Behance, Tumblr, and so on. But then we have some outliers, and one of those is Snapchat. मेरे को एक कॉल आ रही है, मैं उसको, मुझे लगता है मेरा कैमरा सेटिंग चेंज हो गया कॉल की वजह से. आगे देखते हैं. Snapchat decided to go for yellow as their main branding color, which for sure makes them stand out of the crowd. Imagine if Snapchat used blue on their logo. It probably would become somewhat lost in a sea of social media branding. So something else you need to keep in mind when choosing colors for your logos is to understand where in the world your client is based, and also where the target market calls home. Now why is that important? Well, because different cultures will sometimes have different reactions to the same color. White in the West can resemble pure and a clean design, whereas in parts of Asia it can represent death. So again, this comes down to research and just data gathering. Simply coming to Adobe Color, which is totally free, and then head into the Explore option. Here we can type in relevant keywords from our brief and our client research, and this will help us decide on relevant color schemes for our designs. As an example, if I'm designing a logo for a kind of modern tech startup, this color palette right here would be possibly a great idea. In fact, I know I've seen such logos use this kind of palette before in the past when it comes to tech-inspired logos.
This easy method for choosing colors is so fast, and yeah, it's pretty easy to do. Not to mention really highly targeted towards our audience if we've done the correct research. The best time to use this tool is probably on logo designs or branding projects, or just when you want to evoke a very certain emotion to the audience. But what about this color wheel here? Well, I got this thing a long while back on Amazon, and I think it was about $10 or thereabouts, so not too expensive. But yeah, this single color wheel actually does 4 very important things. Firstly, it shows us what colors we get if we add the 3 primary colors to another color on the wheel, as well as adding black or white. So here, if we add red to blue, we get purple as the example. On the front here, it also shows us from white to black in grayscale as it's printed out, found along the bottom. And all of this is just really good to have when you're designing on your computer at your desk. But the really cool thing is when we go ahead and flip it over to the back. But yeah, firstly on the back, we can see in real time the complementary, the split complementary, and the tetrad color schemes. It also goes into detail about analogous, triad, and other harmony good stuff. But if you look right here, we also have tint, tone, and shade for every single pure color on the color wheel. This thing is really handy for people who learn in a hands-on kind of way. It's also good to have at your desk when thinking about print design work. And it also kind of doubles up as a frisbee. Maybe not. The third tool that is used for color and which designers probably should be using is built directly into Adobe Illustrator. When we come into the Edit Colors menu and go to Recolor Artwork, make sure the link icon is checked, and then we can experiment by shifting the color scheme for a single design as a whole. You can of course unlink the selection to move around single colors, but if you want to make quick variations of a color scheme of an entire design, this is perfect for that kind of situation. Now here's the next tool for color use, and it's called Pigment. On the left, we can quickly change the brightness and saturation of the selection, and then hop into something we like the look of. This is where this website really comes into use. You'll notice at the bottom we have the hex code, the RGB values, but also the Pantone, which is really useful. And if we come up here and click More Actions, we can see that we're able to download the color choice to 3 different useful file formats. We can create and control the direction of a gradient using just the 2 colors. And we can create a duotone image with those 2 colors, which is pretty cool. We just need to search in the search bar, find an image, and apply the color as a duotone. And of course, we can also share the color scheme to somebody else. Now let's not talk about the other option on there, which was use a logo maker with those color schemes, because the less said about logo makers, probably the better. But yeah, this tool is best used for those who want a quick and intuitive way to make a cool duotone color scheme for your next project. And the 5th tool today is a bit more advanced than the previous one. Peloton can look a bit confusing when you first open it, but here's the main use case for this thing. Now we can do conventional stuff for creating color harmonies on the wheel. And then off to the right, we have color options related to those harmonies with the hex color codes and so on. However, if we come up to the examples here, we can see our selected color scheme and how it might function on real life projects. Firstly, on a website design, which, yeah, let's be honest here, this web page looks like it's straight up from the 1990s. But it is cool nonetheless, I'm sure you will agree on that. And then we can see it right here on some animated graphics as well. Peloton आप यूज़ कर सकते हो मोशन ग्राफिक्स में, जो वीडियोस के पीछे मोशन ग्राफिक्स आपको दिखते हैं उसमें आप Peloton का यूज़ कर सकते हो। मेरे को यहाँ से ध्यान आया जो उसका वो बबलिंग वाला किया या वो स्ट्रिप्स वाला किया या स्टार्स जो भी है वो। We can also export our creator palettes, which is always handy to have, of course. Moving on, we're going to look at a Photoshop trick that will save you heaps of time and will really help when using color. Now, I first heard of this from the great Piximperfect some years ago. If we want to change the color of an obvious selection on our image, we don't need to use any masks at all. Just simply go ahead and make a hue saturation adjustment layer.
and then select this tool here and sample your desired color. Once selected, you'll notice Photoshop has actually picked it out at the bottom here, which then means we can just go ahead and change the hue of the selection really easily indeed. And of course, that's without using any masks. This color wheel in particular is useful because it shows hues, tints, tones, and also shades. कलर व्हील आप जो देख रहे हो अभी, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट कलर व्हील है, तो इसको आप ध्यान से देखना। इस कलर व्हील का जो सबसे टॉप वाला पार्ट होता है तो वो होता है ह्यू, यानी कि सिर्फ कलर, उसमें और कुछ नहीं है। प्राइमरी कलर मान लो वही होते हैं मैक्सिमम टाइम्स, जो आप आसपास में नेचुरल चीज़ों में देखते हो और आपको आसानी से दिख जाते हैं और आप उसका नामकरण कर देते हो, वही है ह्यू। जिनका आप थोड़ा नामकरण नहीं कर पाते कि ये अब ऑरेंज है या येलो है, ये ऑरेंज है, येलो है या क्रीम है, तो वो थोड़ा आपको टिंट और टोन में मिल जाता है। और इसकी जो प्लेलिस्ट होगी कलर थ्योरी की, वो प्लेलिस्ट भी मैं दे दूंगा, आप सीधा प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। मेरी वीडियो पे टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वीडियो लंबी होगी, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ। तो अगर आपको सिर्फ सीखना ही तो आप मेरी थोड़ी सी वीडियो देख के ये डिसाइड कर सकते हो कि ये वाली वीडियो आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। मैंने जो अभी ये वाली वीडियो देखी है, ये ख़त्म होने को आई है, 5-6 मिनट की बची है। ये वीडियो तो बीच के कुछ पार्ट्स थे जो बिल्कुल बेकार थे, लेकिन ये वीडियो बाकी कलर थ्योरी वीडियो से बहुत ज़्यादा है। आप इंटरनेट पे जिस वक्त जाओगे तो आपको कलर थ्योरी की वीडियोस बहुत मिलेंगी, लेकिन आपको वो मिलेगा नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं। शेड्स में आप जैसे चलेंगे, शेड्स में आपको मतलब स्किन को मान लो, ये चीज़ लड़कियों को ज़्यादा पता होती है, लड़कों को तो बिल्कुल अक्ल नहीं होती है इस चीज़, क्योंकि लड़कियां मेकअप करती हैं तो उनको पता होता है उनकी स्किन पे कौन सी शेड का उनको फाउंडेशन लगाना है, कौन सी लिपस्टिक लगानी है, या कौन से कलर की वो आई लैशेस के ऊपर जो भी होता है वो मेरे को नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो शेड्स वही चीज़ होती है जो उन पर सूट कर रही है। अब आपको किसी लड़की का अगर मेकअप दिख रहा है तो आपको ब्राउन दिख सकता है, आपको वाइट दिख सकता है, थोड़ा क्रीम ब्राउन दिख सकता है, वाइट ब्राउन दिख सकता है, ब्लैक दिख सकता है। वो उनकी स्किन नहीं है, असली स्किन का कलर अलग होगा उनकी जो नेचुरल स्किन, लेकिन जो उन्होंने मेकअप की वजह से स्किन अपनी ली है या अलग दिखने की कोशिश की है, तो वो लड़की। अब आप देखोगे कई जगह पे शादियों में ओवर मेकअप होता है या मेक ओवर बोलते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, बेकार भी लगता है वो कभी कभी अगर अच्छे आर्टिस्ट ने। उसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि वहाँ पे जो फाउंडेशन वाली जो भी पार्लर से आते हैं लोग, तो वो अलग अलग शेड्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। उनको उस लड़की की स्किन के बारे में नहीं पता होता है उतना डिटेल में, लेकिन लड़कियों को खुद से पता होता है क्योंकि वो काफ़ी देर से इसमें आप शेड्स को ध्यान रख सकते हो, नहीं तो अगर आपके घर में कोई बहन है तो आप उससे पूछ सकते हो। The hue is the pure color around the edge of the wheel, and then the tint is taking the hue and adding a white to it. A tone is the hue plus white and plus black, and finally the shade is the hue plus black. Let's move on to the color groups. Like I've said before, monochrome is one of my favorite color groups, but it does have a time and a place. To make a monochrome color, select a hue and then add some black or some white to the hue, i.e. a tint or a tone or a shade, and then generate a color spectrum by using that one hue. The thing about monochrome color schemes is that the eye viewing it brushes over them smoothly and softly because there's no real contrast in color. So it's very relaxing and very appealing to the eye, but this means that your design is not going to pop, so to speak, and so it's not exactly attention grabbing. That should suggest that you shouldn't use this color scheme for designs that warrant urgent attention, so like signs or charts and stuff like that. But I find it's very good for digital art and certain logo designs too. Complementary colors are maybe the easiest to understand. You simply select one hue from the color wheel, and then locate the direct opposite of that color on the wheel.
It doesn't have to be a hue though, you can use a tint, a tone or a shade, but the key is to locate the direct opposite of that colour. Unlike monochrome colours, complementary are totally contrasting, which means they can be jarring on the eyes, but they do grab attention. Also, there is something appealing to the eye about them when using designs. However, you need to use them with caution. Try and use like a hue and a tint, and then complement that hue and that tint to have 4 different colours, instead of just 2. This gives the design more depth, and it's not going to be so jarring on the eyes. ये चीज़ देखी होगी, जितने भी डिजिटल आर्टिस्ट हैं तो वो ये वाली चीज़ करते हैं, जितने भी आईपैड पे वो ड्राइंग्स वगैरह बनाने वाले आर्टिस्ट हैं, वो डिजिटल आर्टिस्ट हैं, तो वो ये चीज़ करते हैं कि उनके पास बहुत सारे कलर्स एक कलर रख लिया, मान लो रेड रख लिया, अब उसमें वो वाइट और ब्लैक ऐड करते रहते हैं, उसकी वजह से वो अलग अलग टोन्स देते हैं, वो भी मोनोक्रोमेटिक बनता है। आर्ट्स देखी होंगी आपने। हाँ, डोम्स की वेबसाइट आप देख सकते हो। डोम्स की वेबसाइट है जो, वो ऊपर से काफ़ी अटेंशन ग्रैबिंग लगती है, नीचे 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 आते आते उसके कलर वो वाइट्स में चले जाते हैं, उसकी टून कम होती जाती है, वो टून टिंट कम होती जाती है, मतलब उसमें वाइट ऐड होता जाता है, वो नीचे आते आते कलर थोड़ा लाइट होने पड़ जाता है, या डिम बोलो वैसा होने पड़ जाता है। A famous design that uses this scheme is the Firefox logo, and also notoriously the drink Fanta uses a complementary colour scheme too. Analogous is where you take one colour on the base colour and then choose a colour either side of it on the colour wheel. This is a 3 colour analogous scheme, but if you want to use 5, just choose 2 more either side of the first selection. Much like monochrome colours, analogous do not have much contrast within them. They have slightly more, but they're not exactly complementary, are they? With that in mind, these are again good for digital art, softer designs, and specific logos. I personally wouldn't be using them for a sign that says for sale or wants to grab some attention. अब आप अगर एनालॉगस देखोगे तो एनालॉगस यूज़ हुआ है डोम्स में। डोम्स की जितनी भी नोटबुक्स आती हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ आता है वो एनालॉगस यूज़ करता है, एनालॉगस थीम, कलर थीम। और डोम्स की जो वेबसाइट है वो भी कुछ जगहों पे एनालॉगस यूज़ करती है, सारी जगहों पे नहीं यूज़ करती है, कुछ जगहों पे। This next colour scheme requires that you find a colour that you wish to use for your design, then move 4 spaces leaving 3 gaps in between, and then do that again around the colour wheel. You then have 3 different colours evenly spaced out around the wheel. Tri-edit colours need to be used very wisely because they're very contrasting, and a design can be overpowering to the eyes when using this scheme. Nice. अभी ये जो आपको क्या नाम है इस सॉफ्टवेयर का, फायरफॉक्स, मोज़रेला फायरफॉक्स, तो इसके आप जो टेल देखोगे, जो लोगों की टेल है वो मोनोक्रोमेटिक थीम को फॉलो कर रही है, और फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री थीम को फॉलो कर रही है जो अर्थ के इर्द गिर्द या जो भी है क्या बोलते हैं बॉल टाइप का है, उसके इर्द गिर्द फॉक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री को क्या बोलते हैं फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे 2 स्कीम्स फॉलो हुई है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। So I again suggest to experiment with tints and maybe tones and shades. They are great for charts and infographics, but make sure that text and information isn't lost due to the high contrast of colour. One famous logo that utilises this colour scheme is the Burger King logo, and it's a very attention-seeking design in terms of colour. Finally today we have split complementary, and this is where you choose a colour from the colour wheel, then move directly opposite, but take 2 colours on either side of that opposite colour. This colour scheme is quite obscure and it's very difficult to get a good balance in terms of colour for your design. It can work however, but it would require experimentation and playing around with tints somewhat. As you can see on this web design page, apart from the cyan and the white, everything is split complementary, and it does actually work pretty well. जैसे कि नाइकी के शूज़ देख लो, जो
कोबी 24 शूज़ देख लेते हैं हम। जो कोबी 24 आया था, बहुत पुराना शूज़ है, उसको 2022 में भी री रिलीज़ किया था। तो उसमें आपको क्या चीज़ दिखेगी कि वहाँ पे काफ़ी सारे कलर यूज़ हुए हैं, लेकिन वो और कोई थीम नहीं यूज़ फॉलो कर रहे हैं, वो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री थीम यूज़ कर। ये क्या थीम शूज़ में अगर यूज़ की जाए तो बहुत सारे शूज़ बहुत सारे लोगों पे अच्छे दिखते हैं, अगर ये थीम यूज़ की जाए। ये आसान थीम है शूज़ ब्रांड्स के लिए। और अगर आपको लग रहा होगा मैं कलर थ्योरी क्यों पढ़ रहा हूँ, तो कलर थ्योरी पढ़ने का मेरा मेन रीज़न है कि वीडियोस में यूज़ होता है। अभी मेरे पास बैकग्राउंड जैसे मेरा है वो काफ़ी नॉर्मल लगता है, और अजीब भी मेरे हिसाब से उतना अजीब नहीं लग रहा है अभी, लेकिन फिर भी देखते हैं, इम्प्रूव हो सकता है तो इम्प्रूव करेंगे ना। तो बाकी यही है, मैं बैकग्राउंड के लिए और जो थंबनेल डिज़ाइन करने वाला हूँ अपनी वीडियोस के लिए, उसमें यूज़ करने वाला हूँ मैं कलर थ्योरी को। तो इसीलिए मैं कलर थ्योरी को सीख रहा हूँ। आपका रीज़न अलग हो सकता है। ऊपर से मेरे को कोडिंग भी आती है, HTML और C++, और साथ में मेरे को स्क्रिप्ट भी आती है। और आप उसकी वजह से मेरे को जो वेबसाइट डिज़ाइन करनी होती है या पेजेस डिज़ाइन करने होते हैं, उसमें भी ये हेल्प करेगा। और मैं अभी पाइथन भी सीखेंगे हम, लेकिन आगे थोड़े देर के बाद, क्योंकि अभी जो मैं चीज़ें सीखने वाला हूँ वो एक दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए। कलर थ्योरी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आसान है। और मेरी लाइट भी डेड हो चुकी है, क्यों डेड हुई है ये पता नहीं है, मैं उसको चार्ज पे लगा लेता हूँ पहले। हम अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे, लाइट चार्ज हो जाएगी, उसको काफ़ी टाइम लगता है, तो काफ़ी चली है। वैसे भी मैंने लाइट की ब्राइटनेस ज़्यादा रखी थी नीट्स में, कोई नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि कामनेस मतलब अगर आपको किसी चीज़ को शांत दिखाना है तो उसका कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन दोनों कम रखो। तो अगर आप तो बिल्कुल नए हो, जिसको कोई पता नहीं है, आज ही फ़ोन उठाया, तो आपको मेरी वीडियो कैसे मिल सकती है, पहली बात। तो दूसरी बात कि अगर आपको दिखाना है कामनेस, तो कंट्रास्ट को कम करो। कंट्रास्ट होता है मतलब एक हिसाब से आप लाइन मान लो, अगर एक आप ड्राइंग करते हो, उसकी ड्राइंग की लाइंस जो होती हैं वो पतली मोटी होती हैं अलग अलग जगह पे। अगर आपने कार्टून्स में देखा होगा तो वहाँ पे भी कुछ जगहों पे, जैसे फेस पे काफ़ी लाइंस मोटी होती हैं और बालों पे लाइंस पतली होती हैं। या फिर ड्रैगन बॉल जी को देख लो, उसमें बॉडी पे लाइंस बहुत मोटी होती है, थिक होती हैं बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह से वो उसकी बॉडी काम लगती है, वो बॉडी स्ट्रांग लगती है, काम नहीं लगती, उसकी बॉडी स्ट्रांग लगती है उसकी वजह से। और जो फेस है वो उसका काम लगता है। गोकू को देख लो, अब वहीं पे आप किसका फ्रीज़ा का देख लो, फ्रीज़ा की बॉडी का लाइन आर्ट बिल्कुल बराबर होता है, एकदम बराबर, हर जगह से बराबर हो, लगभग बराबर होता है। कुछ जगहों पे कम भी होगा डेप्थ वगैरह दिखाने के लिए, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे वो कम ही होता है। तो उसकी वजह से वो क्या है कि वो एक एक्टिव और एरोगेंट टाइप का कैरेक्टर दिखता है दिखने में भी। अगर आप सिर्फ फ़ोटो देखोगे उसका, तब भी आपको वो एरोगेंस दिखती है उसके अंदर, बिकॉज ऑफ वो लाइन आर्ट की वजह से। और बाकी अगर आपको एक्टिव कैरेक्टर दिखाना है, तो एक्टिव कैरेक्टर में हमारे पास आ जाते हैं, जैसे ब्लैक क्लोवर से आप ले लो आस्था को, या कहीं और से बेन टेनिसन को ले लो। बेन टेनिसन का जो फर्स्ट क्लासिक शो था उसमें उसकी लाइन आर्ट मोटी थी, जब उसका एलियन फोर्स आया उसमें लाइन आर्ट पतली हो गई। तो लाइन आर्ट पतली होने की वजह से जैसे वो बड़ा हुआ वो काम हो गया, लेकिन पहले जो था वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था क्लासिक में बेन टेनिसन। और सैचुरेशन, अब सैचुरेशन का मतलब यहाँ पे दिया गया है कि जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सैचुरेशन बढ़ रही है, हम सैचुरेशन बढ़ाते हैं किसी भी कलर की। जैसे ड्रैगन बॉल पे चलते हैं दोबारा, जो ड्रैगन बॉल जी आया था उसमें जो हेयर कलर थे उसका, गोकू का, जब वो सुपर सैयन बनता था,
तो वो थोड़ा लाइट था, कम सैचुरेशन थी, तो वो उसको काम दिखाता था उस वक्त। यही किया था उन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, ड्रैगन बॉल सुपर में, तो उसमें भी वो काम दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप बाकी फॉर्म्स उसकी देखो, जैसे सुपर सैयन ब्लू या सुपर सैयन गॉड देख लो, उन दोनों में रेड और ब्लू कलर की सैचुरेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहा था। अब आप अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में देखो वो कितना एक्टिव था, वो ऑटोनमस, मतलब खुद ही चल रहा था, इंडिपेंडेंट, किसी और चीज़ पे उसका नहीं, हर मसल इंडिपेंडेंट था। तो लेकिन वो ज़्यादा एक्टिव था ड्रैगन सुपर सैयन गॉड से या सुपर सैयन ब्लू से, लेकिन फिर भी वो हमें काम दिखा वहाँ पे, ऐसे एक पावरफुल लगा। कामनेस मतलब पावरफुल होती है कुछ जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे कामनेस, जैसे थॉमस शेल्बी को देख लो, वो काम रहता है तो उसमें भी कितनी पावर दिखाई देती है उसकी कामनेस में। तो वैसे ही वहाँ पे ड्रैगन बॉल सुपर में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से, तो वैसे ही आप सैचुरेशन को ले सकते हो कि वीकर सैचुरेशन, मतलब गोकू का जो सुपर सैयन 1 था, तो उसमें वो गोल्डन या सुपर सैयन गोल्डन, तो वो थोड़ा वीक था, तो उसमें वो काम दिखाई दे रहा था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी वो काम दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसमें भी वो वीक था सैचुरेशन। लेकिन अगर हम सुपर सैयन ब्लू को देख लें या रेड को देख लें, उसमें सैचुरेशन बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से वो एक्टिव दिखाई दे रहा था। वेजिटा तो मैक्सिमम टाइम एक्टिव ही दिखाई देता है, लेकिन जब भी वो ट्रांसफॉर्म करता है सुपर सैयन में, तो वो मैक्सिमम टाइम उसका स्क्रीन टाइम पे हम सुपर सैयन 2 देखते हैं, क्योंकि उसमें वो उसके कैरेक्टर के साथ मैच होता है। अगर वो सिर्फ सुपर सैयन 1 में ट्रांसफॉर्म होगा तो वो काम लगेगा, तो वेजिटा अभी तक काम नहीं बना है, वो आपको भी पता है, कम से कम एनिमे में तो नहीं बना है अभी तक। हाँ, अब हम आगे वाली वीडियो पे चलेंगे। तो आगे कलर थ्योरी के, अब जो है फिल्म में कैसे कलर थ्योरी को यूज़ किया जाता है या कलर ग्रेडिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं। Would you be able to sleep in a room painted bright red? Might be hard, right? I'm on no sleep. No sleep. You don't know what it's like in there. Colors elicit emotions and have a psychological effect on people. So unless you're shooting in black and white, in which case definitely review our video on tone, this is the video for you. Because today, we're going to show you how colors can be used to create mood. But you can go beyond placing a blue tint over an entire sequence. You can determine specifically what type of blue you want. There are 3 factors in determining color. They are hue, which is the color itself, saturation, the intensity of the color, and brightness, how light or dark the color is. With just hue, saturation, and brightness, HSB for short, you can create a complex color scheme rather simply, and go from being just another director to being a true visual artist. First up, hue. अब जैसे कि इस वीडियो में दिखाया है अभी कि ह्यू हम देखते हैं काफ़ी सारे कलर्स, जैसे ब्लेड रनर में हमें काफ़ी सारे कलर्स दिखाई दिए थे। उसके बाद हमें बहुत सारी मूवीज़ में, ज़्यादातर बॉलीवुड की मूवीज़ में हमें बहुत सारे कलर दिखाई देते। अब मोनोक्रोमेटिक ज़्यादातर नोलन की मूवीज़ में दिखाई देते हैं। इंसेप्शन को देख लो, या फिर इंटरस्टेलर को देख लो, या फिर आप अभी न्यूली जो आई है क्या बोलते हैं ओपनहाइमर को देख लो। उनमें एक सैचुरेशन डिफरेंट कर करके दिखाया जाता है, मतलब इमोशंस को सैचुरेशन के हिसाब से दिखाना नोलन के हिसाब से बेटर है। Some movies choose an affinity of hue, utilizing a monochromatic color scheme. Those are just fancy ways of saying that a movie is mostly one color, or neighboring colors on a color wheel, also known as analogous colors. The Matrix is a classic example of a movie that mostly uses one color. That color? Green. Why? Well, the movie takes place inside of a digital matrix, and we associate green with code. Plus, the green in the Matrix has a certain sickly quality to it, reflecting the overall state of affairs in that world. Welcome to the desert of the real. Next up is the S in HSB, saturation.
This movie used a post-production process called bleach bypass, which has a deeply desaturating effect. The color is drained out of these images. It gives the world of the movie a cold, raw, gritty sort of look. It also becomes reminiscent of the faded photographs, the black and white newsreels of the period itself. It takes us back in time. ये जो अभी इन्होंने पहले पूरा कलर हटाया, वाइट किया उसको, फिर उसको दोबारा से कलर ग्रेड किया, तो ये वाला सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका कलर ग्रेडिंग बिल्कुल बेकार हो जाती है तो आप उस पूरी कलर ग्रेडिंग को पीछे मत ले जाओ, उस पूरी कलर ग्रेडिंग पे आप वाइट वॉश कर दो, एक हिसाब से वाइट फिल्टर डाल दो या ऐसा कुछ डाल दो, फिर उसको दोबारा से कलर ग्रेडिंग करने की स्टार्ट करो, तो उसकी वजह से आपका कलर ग्रेडिंग जो होगी ना वो इम्प्रूव हो जाती है। वो जो वाइट होता है, आप जैसे देख लो आपकी वॉल्स होती हैं जो घर की, उसके ऊपर पहले वाइट प्रीमियर किया जाता है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट कलर आप ऊपर डालोगे उसके वो अच्छे से दिखाई देगा। तो ये वाला जो टेक्निक अभी दिखाई है, जिसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हुई है लेकिन टेक्निक दिखाई गई है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है जब आप कलर ग्रेडिंग कर रहे हो। तो यूट्यूब में अगर कोई कलर ग्रेडिंग कर रहा है या एडिटर वगैरह है तो कलर ग्रेडिंग में ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में लेके करके देखना, छोटी सी क्लिप्स पे करके देखो। The final of the three is brightness. तो बाकी जो तीसरी चीज़ आती है वो है यहाँ पे ब्राइटनेस। सुपरमैन की एग्जांपल से, सुपरमैन एक क्लासिक अच्छा कैरेक्टर, एकदम प्योर कैरेक्टर है पुरानी मूवीज़ में, लेकिन जैक स्नाइडर का स्टाइल जो है वो थोड़ा डार्क है। तो जैक स्नाइडर ने सुपरमैन को डार्क दिखाया है, जो कि वो अच्छा लगा वहाँ पे हमें, लेकिन सुपरमैन तो हमेशा से अच्छा था, वो ब्राइट कैरेक्टर था, कभी डार्क कैरेक्टर था ही नहीं। डार्क कैरेक्टर के लिए तो बैटमैन है ना वहाँ पे। तो इसीलिए जो सुपरमैन है वो आप मान लो मार्वल था, डीसी का मार्वल था, तो लेकिन जो बैटमैन है वो डीसी का डीसी है। तो मतलब जैसे भी मान लो आप, क्योंकि डीसी को हम डार्क से कंपेयर करते हैं, जबकि उसमें बस लाइट कम होती है, डार्क थीम की बात नहीं कर रहे हैं हम, लाइटनिंग की बात, जो कि जैक स्नाइडर डार्क थीम में, जैसे अभी मून लाइट आया था, मून नाइट जो भी आया था उनका, मून लाइट आया था शायद, रेबिलियस कुछ ऐसा करके, तो वो एक मूवी आई थी उनकी, तो उसमें भी मैंने वो देखी नहीं है, मैंने उसका सिर्फ ट्रेलर देखा था, वो थोड़ी डार्क टोन में जा रही थी। तो जैक स्नाइडर का यही है। अब सेम रेमी को देख लो, वो ऐसे ग्रेडियंट सी टोन में जाना चाहते हैं, जो कि आप सैचुरेशन और ब्राइटनेस दोनों का मिक्सचर से पा सकते हो। जैसे आप मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को देख लो, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कलर कम थे लेकिन वैरायटी फिर भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बिकॉज ऑफ सैचुरेशन की वजह से और ब्राइटनेस की वजह से। क्योंकि सैचुरेशन अगर कम ज़्यादा होती रहती पूरी मूवी में तो वो नोलन जैसी फील देती, लेकिन वो मूवी फिर भी आपको कलरफुल लगती है क्योंकि ब्राइटनेस कम ज़्यादा होती है उसकी वजह से। बाकी ह्यू से तो मैक्सिमम बॉलीवुड, ह्यू इज इक्वल टू बॉलीवुड मान लो अभी फिल्म्स में। वैसे सबसे बेटर अगर एग्जांपल मेरे माइंड में आता है वो ब्लेड रनर 2049 है, जो हमने देखी थी रायन गॉसलिंग की। आगे देखते हैं। Earlier in this series, we covered brightness in terms of a film's overall tone, but brightness can be used to affect individual colors as well. Sometimes a movie elects to use entirely bright colors, particularly movies from the Technicolor era. Back then, bright, vivid colors were a reason to see the movies alone. On the other hand, during darker scenes like this, you could almost forget that this movie was shot in color. Now let's see what it's like when one movie does both. When the destiny of a great fortune is at stake, men's greed spreads like a poison in the bloodstream. It's using all darker colors. Contrast that with this scene, where all the colors are bright. In both instances, every element you see was chosen for its darker color, or lighter color to create a contrast within the film. Wow. So by utilizing hue, saturation, and brightness, you can precisely identify the right colors to create certain feelings in your audience. Bright images often seem lively and exciting. Darker images often seem dramatic, and on it goes.
but rules were made to be broken. I don't make the rules. Okay, I'll make it as easy for you as I can. You get to decide what the colors mean. It's your movie, it's your world, and so make it your color palette. How do you make a violent red, the color of blood, feel like something else? In Her, Spike Jonze uses red to connote love. He does it by associating the color with the lead, Theodore, as he searches for love and ultimately finds it in his operating system. Hello, I'm here. Oh, Black is for bad guys like Darth Vader, right? Well, sure, until it's for Batman. I'm Batman. You get to make your own rules. Look at how Wes Anderson uses saturated colors to make otherwise mundane scenes about a family pop almost like a comic book, while actual comic book films ground their high-concept plots in gritty, realistic tones. With the wealth of options post-production now provides, it's easier than ever to control the color palette. Of course, color grading can be an expensive, lengthy process, and it rarely can make up for a project that lacked a thoughtful color design strategy in pre-production. Want to dive deep? यहाँ पे हमें हर की एग्जांपल दिया है। हर जो 2014 की मूवी है, तो उसमें आप देखोगे पूरी मूवी में रेड टोन जा रही है, लेकिन वहाँ पे फिर भी आपको वो विलन नहीं दिखता है। जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रेड को चूज़ कैसे किया जाए, तो वही वहाँ पे चूज़ किया गया। तो हर मूवी में कहीं पे भी हमें डार्क रेड नहीं दिखता है, उसके सैचुरेशन दिखता है, वाइट्स में दिखता है, ब्लैक्स में नहीं दिखता है। मतलब जिस वक्त हम ह्यू में वाइट या ब्लैक ऐड करते हैं, वो आपने पिछली वीडियो में देखा था, तो वो बात याद रखना। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपका यहाँ पे, कि आपको पता चलेगा कि रेड आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो, बस उसकी टोन को कैसे आपने चूज़ करना है, कैसे कहाँ पे यूज़ करना है, वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। रेड भी आप मैक्सिमम टाइम यूज़ कर सकते हो, ऐसा कलर है कि वो यूज़ हो सकता है बार बार, तो ये बात आप ध्यान में रख सकते हो। डार्क वेडर और बैटमैन की यहाँ पे एग्जांपल दी है। जो डार्क वेडर है वो एक अच्छा इंसान था, उससे बाद वो बुरा बना, और जो बैटमैन था वो अच्छा इंसान था, बस अभी भी अच्छा इंसान है, बस बुरे काम करके अच्छा काम करता है ना, बुरे टाइप से अच्छा काम करता है। तो दोनों में एक डार्क थीम आ ही जाती है एक हिसाब से, तभी उन दोनों का सूट जो है ब्लैक है, उनकी थीम ब्लैक है, उनका एटमॉस्फेयर ब्लैक होता है, उनके कैरेक्टर्स थोड़े ब्लैक हैं। ब्लैक इन द मतलब क्या बोलते हैं, स्किन के हिसाब से ब्लैक नहीं है, बल्कि वो क्या बोलते हैं, उनके कैरेक्टर में एक एंटी हीरो टाइप का क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके एंटी हीरो टाइप का। जैसे कि आप देख सकते हो बैटमैन में, बैटमैन कभी कभी ब्रूटली कुछ लोगों को मार देता है, या फिर जोकर को बार बार भागने देता है, या फिर हाँ, बैटमैन उतना बुरा नहीं है। जैसे कि पनिशर को देख लो, पनिशर एकदम मार देता है लोगों को, लेकिन वो फिर भी पनिशर जो है उसकी डार्क थीम है, लेकिन वो डार्क सराउंडिंग नहीं है उसकी। तो पनिशर में यही चीज़ उसकी जो है वो आपको डरावनी लगती है, थोड़ी अजीब लगती है, थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, थोड़ी गोरी लगती है। जबकि बैटमैन के साथ ऐसा नहीं होता। बैटमैन की आप जितनी मर्जी मूवीज़ देख लो, वो फिर भी चाइल्ड फ्रेंडली लगती हैं आपको, क्योंकि वो कैरेक्टर डार्क नहीं है, सराउंडिंग डार्क है। जबकि डार्क वेडर का ये है कि वो कैरेक्टर भी डार्क बन चुका है और सराउंडिंग भी डार्क है। अब एनाकिन जब था उसकी वो जब तक एनाकिन था वो वाइट सराउंडिंग में भी था, गुड सराउंडिंग, नॉन डार्क या ब्राइट बोल सकते हो आप, ब्राइट सराउंडिंग में था, और वो कैरेक्टर भी ब्राइट था। तो दोनों मूवीज़ में कलर और ब्राइटनेस को किस टाइप से यूज़ किया गया है वो भी आप सोच सकते हो कि ब्लैक एक मूवी में आपने यूज़ किया है डार्क थीम के लिए, और क्या बोलते हैं, कैरेक्टर की डार्कनेस दिखाने के लिए। दूसरी थीम में उस सिटी की डार्कनेस दिखाने के लिए यूज़ किया गया है ब्लैक, ताकि वो जैसे स्पाई मूवीज़ होती हैं कि आप उनमें घुल मिल जाओ, वैसा ही बैटमैन है कि वो बस घुल मिल जाता है। कभी कभी स्पाई लोग को कुछ इनोसेंट लोगों को मारना पड़ता है, वही बैटमैन भी करता है।
जो आपने बैटमैन और डार्क वेडर की एग्जांपल देखी है वो परफेक्ट है। अब यहीं पे आप ह्यूज देख सकते हो। जोकर का जो कॉस्ट्यूम है उसमें पर्पल यूज़ होता है, रेड टाई होती है, उसकी वाइट शर्ट होती है और उसकी स्माइल रेड होती है और डार्क सर्कल्स भी रखे गए हैं, ग्रीन बाल है। तो वो कितना कॉन्ट्रास्ट है उसमें, मतलब वो कॉन्ट्रास्ट में कितने ह्यूज अलग अलग कलर की ह्यूज है। और जोकर का करेक्टर एकदम लेजेंडरी लगता है बिकॉज ऑफ लुक्स की वजह से भी। उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, मान सकते हैं, लेकिन उसके लुक्स भी मैटर कर रहे हैं। मूवी में देख लो, कॉमिक्स में देख लो, वो जो उसके ग्रीन बाल हैं वो बहुत सारे लोगों के फेवरेट कैरेक्टर होते हैं। जैसे मास्क मूवी देख लो, मास्क में भी उसके ग्रीन बाल थे, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। ग्रीन बाल्स इन विलन के कैरेक्टर में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। अब जैसे रोनिन देख लो, रोनिन जो हमारा इन्फिनिटी वॉर का थैनोस का चमचा था, तो उसके पर्पल शेड है पूरी, वो फेमिनिन लगता है उस पर्पल की वजह से, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक डार्क टून आ जाती है उसके ऊपर। वो ह्यू की वजह से नहीं आई है, वो उसके सराउंडिंग की वजह से आती है। अब उसी रोनिन को निकाल के आप किसी वाइट बैकग्राउंड में डाल दोगे, आपको वो थोड़ा अच्छा और एक लड़की जैसा कैरेक्टर दिखाई देने पड़ जाएगा। बट अगर आप उस रोनिन को आप मान लो कि वो उसी डार्क थीम में, जहाँ पे वो स्पेसशिप में होता है या स्पेस में होता है, पीछे पूरा अंधेरा ही अंधेरा, डार्क या ब्राउन थीम्स, वहाँ पे वो एक डार्क कैरेक्टर लगता है बिकॉज ऑफ हिज सराउंडिंग। और बैटमैन भी डार्क कैरेक्टर लगता है बिकॉज ऑफ हिज सराउंडिंग। लेकिन सुपरमैन का ऐसा नहीं है। सुपरमैन अगर गौथम में भी आता है तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी लाइट होती है, ब्राइटनेस होती है, उसकी वजह से वो डार्क नहीं लगता है। अब होमलैंडर को देख लो, होमलैंडर इतना डार्क कैरेक्टर लिखा गया है, लेकिन वो डार्क लगता नहीं है बिकॉज ऑफ उसकी सराउंडिंग की वजह से। अभी भी उसको हम भी हीरो मानते हैं, एज अ व्यूअर हम उसको अभी भी हीरो मान सकते हैं, सुपर हीरो बोलते हैं हम, जबकि वो सुपर हीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन लोगों के लिए है लेकिन हमारे लिए नहीं है। लेकिन हम भी सुपर हीरो मान रहे हैं उसको कहीं ना कहीं, सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अभी भी हम उसको कहीं ना कहीं हीरो मान रहे हैं। उसी का बेटा रायन मान लो, रायन जिस वक्त मारता है किसी, जब उसने वो पुश किया था वो डायरेक्टर को, तो वो मर गया था वहाँ पे आप देखो कितना डार्क सीन था, लेकिन रायन पे वो नहीं लगा क्योंकि वो लाइटिंग जो थी उसकी, ब्राइट सराउंडिंग वो एकदम ब्राइट थी, उसकी वजह से नहीं लगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो। फिल्म्स की जो कलर थ्योरी है या कलर साइकोलॉजी है वो काफ़ी आसान होती है समझने के हिसाब से। अगर आप बनाने जाओगे फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप जब 2-4 फिल्म्स के एग्जांपल लेके उसको दिमाग में रख के या नोटबुक्स में लिख लो या पैड में जहाँ पे भी नोट पैड कर रहे हो, तो उसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे कि अगर आप में से कोई यूट्यूब शुरू करने वाला है या कुछ ऐसा प्लान कर रहा है, तो वो ये बात ध्यान में रखना। अब मेरे पीछे वो जो मिगुमी का पोस्टर है, ये वाला पोस्टर लगा है जो ये वाला, तो इसमें आप देख सकते हो ये डार्क रेड है, पीछे आगे डार्क है, यानी मिगुमी अभी भी पीछे एंगर दिखाई दे रहा है लेकिन आगे ब्लैक कलर का सूट उसका, वो ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो रेड की वजह से वो एंग्री तो लग रहा है लेकिन उसका एंगर उसके अंदर है, कंट्रोल में है। ब्लैक की वजह से वो कंट्रोल दिखाई दे रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अगली वीडियो है द साइकोलॉजी ऑफ कलर। तो इसकी वजह से आप इमोशंस दिखा पाओगे। इस वीडियो को मेरी प्लेलिस्ट में रहने का यही मतलब है कि ये इमोशन दिखा पाएगी। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को ये कैसे पता चल रहा है कि क्योंकि मैंने प्लेलिस्ट बनाई है और मैंने बोला आपके साथ सीखना है मेरे को, तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि मैंने इन वीडियोस को ऐसे ही चूज़ नहीं किया है। इन वीडियोस की थोड़ी डिटेलिंग पढ़ी है मैंने। एक मेरे को ऐड आया था कुछ दिनों पहले, तो वो वीडियोस का ब्रेक डाउन करके देता है। एक टूल है, याद नहीं है मेरे को टूल का, मैं टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। स्पॉन्सर नहीं है वो, वैसे भी मेरे को कौन स्पॉन्सर देगा, 900 सब्सक्राइबर है मेरे। तो
वो आप देख सकते हो। उससे हेल्प होगी कि अगर आपको कभी कोई चीज़ सीखनी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि बेकार चीज़ें कौन सी हैं, अच्छी चीज़ें कौन सी हैं। साइकोलॉजी ऑफ कलर में अच्छी चीज़ें ये हैं कि इमोशंस को दिखाने का, या हम उसको कैसे फील कर रहे हैं अभी भी, तो वो ये वाली वीडियो आपको दिखा पाएगी। When you look at most sink designs, the knob that controls the hot water is usually red, and the knob that controls cold water is usually blue. We associate red with hot and blue with cold. This phenomenon is an instance of cross-modal correspondence, a perception where multiple sensory modalities interact. In this case, our visual perception is connected to our perception of temperature. There are a few other examples of this, like synesthesia, a word that traces back to Greek words that mean together sensation. People with synesthesia can associate things like numbers and colors, so 2 might be violet and 5 might be yellow. There's also the McGurk effect, where the same sound can elicit different perceptions based on how we see a person speaking that sound. Ba ba, ba ba, ba ba. Here, our visual perception and auditory perception are becoming intertwined. The Booba Kiki effect is another instance of this. If I present these two images to you, which one would you call Booba and which one would you call Kiki? अब कीकी जो है वो शार्प वर्ड लगता है, तो मैं शार्प वाला कीकी के लिए रखूँगा। और बूबा जो है वो थोड़ा राउंड, ऐसा गोल मटोल। अगर आप ऐसे बॉब देखते हो तो बॉब द बिल्डर भी गोल था, बॉब जो ऑगी एंड कॉकरोचेस में था वो गोल था, या बॉब आप जो एक कॉमिक है स्पाइडरमैन की, उसमें एक बॉब है, वो भी गोल होता है। तो बॉब हमेशा हमें जो है वो गोल मटोल लगता है, और कीकी हमें शार्प लगता है एकदम ऐसे। कीकी अगर हम लड़कियों का नाम रखें तो लड़कियां भी शार्प दिखती हैं। आप देख लो, लड़कियां शार्प दिखती हैं, लड़के उतने शार्प नहीं दिखते हैं। मतलब दिख सकते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं। लड़कियों की मसल डेंसिटी थोड़ी कम होती है लड़कों के हिसाब से, तो उस हिसाब से लड़कियों के लिए भी बेस्ट नेम कीकी है। हाँ, कुछ बॉडी बिल्डर्स लड़कियां भी हैं जो कि एटलीस्ट मेरे से अच्छी बॉडी रखती हैं, तो उसमें उनका नाम बोबा रखना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन रख सकते हैं उनके लिए। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो थोड़ा मैच कर पाएगा। या फिर अगर हम मोबी की एग्जांपल लेते हैं, या मोकी की एग्जांपल लेते हैं, मोकी या बोकी की एग्जांपल लेते हैं हम। ठीक है, बोकी जो है वो शार्प भी लग रहा है और ऐसे गोल भी लग रहा है, सर्कुलर भी लग रहा है। तो बोकी अब आप लड़के पे भी रख पाओगे, थोड़ा अजीब लगेगा लड़के पे लेकिन चल जाएगा। लेकिन बोकी आप लड़की पे रखोगे थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन चलेगा। यानी कि ये दोनों जो बोकी नाम बना है, ये दोनों का मिक्सचर है, तो दोनों पे इक्वली लग सकता है। ये भी हमारा एक परसेप्शन है जो हमारा कलर्स की वजह से आ सकता है या हमारी आइज़ की वजह से आ सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाएगी कि हम कैसे फील कर रहे हैं कुछ चीज़ों को। अब वही आप सीखो कि ये कैसे हेल्प करेगा आपको कलर को समझने में और इमोशंस को समझने में और इमोशंस को रिप्रेजेंट करने में। Both American college undergraduates and Tamil speakers in India are more likely to call the left shape Kiki and the right shape Booba. The way we see these shapes is interacting with the way we hear sounds. But for this video, I'm mostly concerned with color. In 1969, Brent Berlin and Paul Kay studied 20 different languages from around the world, and the words they have for different colors. They identified a total of 11 basic color categories: white, black, red, green, yellow, blue, brown, purple, pink, orange, and gray. In particular, they noticed that some languages didn't have all 11 words, and that there was a pattern for which words a language had. Words for brown, purple, pink, orange, and gray were never present in languages that didn't already distinguish between green and blue. They broke this pattern down into a sequence. Purple, pink, orange, and gray come after brown. Brown comes after blue. Blue is preceded by both green and yellow. Green and yellow come after red. And finally, the most basic language categories are dark cool and light warm, encompassing the set of all cool colors and warm colors as two categories.
Now, it's important to mention that this study has been criticized. It assumes an ethnocentric bias based on Western scientific and political thought. It's basically implying this idea of progress, where more primitive cultures have not sufficiently evolved to capture the true categories of color that the Western languages have. I don't think Berlin and Kay have successfully proven that speakers of so-called primitive languages can't perceive the same range of colors that we can. They just use different category systems to describe them. But what can be said conclusively is that according to the World Color Survey, people all over the world seem to perceive blue as cool and red as warm. Now, this might not be particularly surprising. We make all kinds of associations between colors and concepts. In video games, the health bar is often red, the mana bar is usually blue, and stamina is green. We often associate red with love, anger, or power. Blue has a sophisticated, reliable corporate vibe. Orange is usually associated with energy, taste, extroversion, or amusement. But these symbols vary cross-culturally. Buddhist monks wear orange robes, where orange symbolizes enlightenment. In placebo studies, pills with hot colors like red or yellow work better as stimulants, whereas pills with cool colors like blue or purple work better as depressants. These results do seem to depend on culture, though. Purple was historically associated with royalty, because purple dye was made from a species of sea snail, which excreted it from a single gland, the hypobranchial gland, in very small quantities. This made the dye very rare, and was usually only available to the very wealthy. So just because of this coincidence, that psychological association emerged. The one color association that remains consistent across cultures is cool and warm. This might just be coincidence, but it taps into a much more universal one. Our skin gets red when we're warm, and goes blue when we're cold. When we gaze at a warm, sunny landscape, we're presented with warm colors. When we gaze at a cold, overcast day, we're presented with cool colors. So what even is color in the first place? I'm going to argue that there are two ways of describing it, which are basically captured by two figures: Newton and Goethe. Let's start with Newton and the scientific description of light. Visible light can be understood as waves of electromagnetic radiation. The human eye can perceive wavelengths of about 400 to 700 nanometers. अब जो इन्होंने न्यूटन के कलर्स बताए हैं, तो आपने 10th में, अगर आपने 10th अच्छे से पढ़ी है तो आपने कलर देखे होंगे जो हम प्रिज्म से निकालते हैं। जो ग्लास प्रिज्म होता है हमारा, उससे हमें एक कलर्स का बैंड निकलता है। बैंड मतलब काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, लेकिन हम उसको मेजर विबग्योर में डिवाइड करते हैं। जो 7 कलर हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। जो पीछे वाइट लाइट आ गई तो 8 कलर हुए टोटल, लेकिन साइंटिफिकली हम वाइट को कलर नहीं मानते हैं, और ब्लैक को भी हम कलर नहीं मानते हैं। वाइट मतलब जिससे लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हो, और ब्लैक मतलब जिसमें लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट ना हो रही हो या थोड़ी बहुती रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो जब आप लाइटनिंग पे काम कर रहे हो। अभी जैसे बैकग्राउंड की लाइटनिंग पे काम है, तो मेरा ये वाइट जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होके लाइट जो है वो मेरे पूरे रूम में जा रही है इसकी वजह से, और यहाँ पे एक लाइट लगी है इस तरफ उसकी वजह से। Where 1 nanometer is 1 billionth of a meter. The visible colors on this spectrum increase from red to violet, following the mnemonic Roy G. Biv, which is also a great song by Boards of Canada. The retinas of our eyes have things called cone cells. We have 3 types of those. One responds really well to blue light, one to green, and one to red. The colors we see in the world are the result of the way in which these receptors respond to different levels of blues, greens, and reds that are reflected by materials. In the book, The Physics and Chemistry of Color by Kurt Nassau, he enumerates 15 different causes of color, including everything from the incandescence of flames, the rotations of blue ice and water, and the interference of soap bubbles. A lot of our scientific understanding of color has its roots in an experiment by Isaac Newton conducted in 1704. He constructed a triangular prism and shone a sunbeam through it, refracting its light. Colors emerged from this process of refraction, which he called a spectrum. About 100 years later, Goethe, the German poet responsible for Faust, became interested in color too. Goethe knew about Newton's experiments and tested it himself with prisms he borrowed from a friend. As you do. We've all got that one friend who always has a bunch of prisms on hand. While Newton was concerned with systematically analyzing color in a scientific way, Goethe was interested in color as we see it. He conducted experiments with colored shadows. He noticed that if a colored light is shone on an object, and a white light is shone on its opposite side, we perceive the shadow as the color's complement.
In his color wheel, he situated these complementary colors opposite one another. In his view, our perception strives for unity. Yellow demands violet, orange demands blue, purple demands green, and vice versa. Another instance of this is the phenomenon of accidental color. Here, I've made the screen yellow. Pause the video and stare into the yellow for 30 seconds or so, and then unpause. Your eyes had become accustomed to the yellow, and when the screen abruptly switched to white, your perception conjured a violet hue. Our eye wants to bring harmony to our visual experience. The eye creates freedom for itself by producing the opposite of that which is forced upon it, creating in this way a satisfying whole. Goethe was also very concerned with how color affects us. The color palette of a scene tells us about the seasons and cycles of our world. They show us how to tell one thing from another. We wouldn't be able to spot these berries if they weren't brightly colored. We see certain colors as warm and textural. We see others as cold and spatial. Yellows seem to come towards us, and blues seem to recede away. Not only is color associated with temperature, but also proximity and distance. इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इसमें आप क्या बोलते हैं कलर थ्योरी को उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे यहाँ पे, लेकिन आप इमोशंस को अच्छे से पढ़ पाओगे। चाहे आपके इस वीडियो से कोई नोट्स ना बने या फ्यूचर में आपका ध्यान नहीं रहे, लेकिन ये जो है इसको आप समझने की कोशिश करो और इसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करो कि ये इम्पोर्टेंट है जब आप इमोशंस दिखाना चाहोगे। जैसे कि कभी कभी मूवीज़ में एंगर दिखाना होता है, या जॉन विक की एग्जांपल लेते हैं, उसका एंगर, वो डोर वाला सीन आपको याद होगा, तो वो रेड कलर का पीछे से, लिफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ लिफ्ट वाला सीन जो है वो रेड कलर होता है। अब जॉन विक तो कार्टून कैरेक्टर्स की तरह लाल नहीं हो सकता है, लेकिन उसका बैकग्राउंड इस वक्त रेड हो गया, तो वो एकदम गुस्से वाला बंदा वहाँ पे दिख रहा था, आपको एंगर दिख रहा था उसका वहाँ पे। Goethe took this so seriously that his home was painted very deliberately, with a yellow dining room to create a sense of warmth and pleasure, and a greenish-blue study to promote a stimulating, calming environment. Where Newton's approach was analytic, Goethe's approach was poetic. These aren't necessarily contradictory views either, they're just two ways of looking at things. To elucidate this distinction, consider the scientist Mary. She exists in a black and white world, but she can still study color. She has access to physical descriptions of color. She can tell you which wavelengths correspond to each color, but she can't see them. She has no conscious experience of color. Now suppose Mary is able to exit this black and white world and take in the perceptual experience of color for the first time. The question is, will Mary gain any new understanding? This thought experiment was proposed by Frank Jackson in 1982. Newton approached color as Mary did from her black and white world, while Goethe was concerned with the understanding Mary achieved from actually seeing color. Goethe urged that physical descriptions of color only tell half the story. We can't separate the color in the world from the color as we see it. He didn't view humans as passive observers of things. For him, the outer world calls forth the inner world, meeting in a participatory interaction. Color isn't just light particles out there in the world, nor is it a conscious representation of the light in the world. Instead, color arises through the interplay of light and sight. So in this way, we don't just take color in, color emerges from our interaction with the world. In a sense, we put a little bit of ourselves into the color. In the book Interaction of Color, the artist Joseph Albers discusses the way in which color is relative. In visual perception, a color is almost never seen as it really is, as it physically is. This fact makes color the most relative medium in art. Here's an experiment he describes. There are 3 pots of water in front of you, containing warm, lukewarm, and cold water. You dip your hands into each outer container, left hand in the leftmost pot, and right hand in the rightmost pot. You perceive 2 different temperatures, warm on the left and cold on the right. But then you dip both hands in the middle container. You perceive 2 different temperatures again, but this time in reverse order. Your left hand feels cold, and your right hand feels warm. But in reality, the water is neither of these temperatures. It's lukewarm. The context of our prior experience altered our perception. In the same way that the relative temperature of our hands deceives us in this haptic illusion, where physical fact and our conscious experience don't match. यहाँ पे जो वार्म और कोल्ड का एग्जांपल दिया है और लूक वार्म का एग्जांपल दिया है, मैं इसे हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि अगर वार्म को हम रेड से डिनोट कर दें और
कोल्ड को हम ब्लू से डिनोट करते हैं, तो ल्यूक वार्म कलर कौन सा होगा जिसमें हम, यही एग्जांपल होती है एंटी हीरोज़ के लिए। एंटी हीरोज़ जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, लेकिन उनका एक वार्म साइड भी होता है, तो वो कभी कभी दिखाई देता है। जैसे हम मान लेते हैं पनिशर की एग्जांपल लेते हैं दोबारा से, या डेयर डेविल की ले लेते हैं। वो लोगों को मारते हैं कोल्ड, मतलब कोल्ड कैरेक्टर्स की तरह, लेकिन जो क्या बोलते हैं डेयर डेविल है वो उनको मारता नहीं है, तो वहाँ पे वो अपनी वार्मनेस दिखाता है। लेकिन अब जो है पनिशर, वो मारता भी कोल्ड तरीके से है, और वो उनको मार डालता है, एक हिसाब से मर्डर कर देता है उनका, तो उनको छोड़ता भी नहीं है, जेल भी नहीं होती है, तो वो एकदम कोल्ड बन जाता है। तो उसको वार्म रखने के लिए एक चीज़ आती है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को मारता है, जो कि उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप 30 मर्डरर में से एक किसी को मार दोगे तो 30 के 30 ही रहते हैं। Optical illusions also deceive. They cause us to see colors other than those with which we are confronted physically. Remember this dress? As of the recording of this video, this meme blew up just over 8 years ago. People argued endlessly over whether the dress was black and blue or white and gold. The reason nobody could agree was because people's visual systems were interpreting the photograph in different ways. In particular, different people assumed different conditions of illumination. जो एग्जांपल इन्होंने दिखाया है ड्रेस वाला, ब्लू ब्लैक वाला ड्रेस, तो मैक्सिमम लोगों को जो पर्पल, वायलेट और पिंक कलर है उनमें डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है, मैक्सिमम बॉयज़ को मान लेते हैं। जैसे कि आप मेरे को याद नहीं आ रहा है, एक आर्टिस्ट है, पुराना मतलब 2-3 सेंचुरी पुराना है वो, तो उसने आर्ट्स बनाते वक्त उसको थोड़ा सा कलर से डिफिशिएंसी थी, पूरे नहीं, थोड़ी सी, कुछ कलर्स उसको अलग दिखाई देते थे, तो वो थोड़ा पेंटिंग में प्रॉब्लम कर देता है। हाँ, उसी की वजह से वो फेमस भी हुआ, उसकी पेंटिंग्स थोड़ी अलग अलग थी, लेकिन फिर भी उसको अलग टाइप से कलर दिखाई देते थे। अभी जो हमें ड्रेस दिखाई दे रही है वो ब्लैक एंड ब्लू दिखाई दे रही है, मगर कुछ लोगों को ये वाइट एंड गोल्ड भी दिखाई दे सकती है। मेरे को तो नहीं लगता ये वाइट एंड गोल्ड दिखनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को इसलिए दिख सकती है क्योंकि बीच में अगर आप ब्लैक को ध्यान से देखोगे, इसमें थोड़ा थोड़ा वाइट कलर लगा हुआ है, वो ब्लैक के ऊपर थोड़ा थोड़ा वाइट कलर लगा है, और जो ब्लू की है वो टून उसकी थोड़ी गोल्डन की तरफ जा रही है, और ऊपर वाला जो हिस्सा देखोगे आप ड्रेस का ब्लैक वाला, उधर लाइट पड़ रही है सन की, उसकी वजह से भी वो गोल्ड लग रहा है। अभी अगर आप थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करो, आपको ये वाइट और गोल्ड में चेंज होते हुए दिखाई भी देगा। मेरे को तो मतलब पहले ये पूरा ब्लैक था, अब मेरे को ये थोड़ा थोड़ा गोल्डन दिखाई देने पड़ गए, अब मेरे को और गोल्डन दिखाई देने पड़े। ये आप परसेप्शन चेंज कर सकते हो। ब्लू मेरा कंफर्म है, ब्लू मेरे को ब्लू ही दिखाई दे रहा है, वो मेरे को चेंज होते हुए नहीं देख रहा, लेकिन ब्लैक में गोल्डन शेड आ रही है, वाइट शेड आ रही है, वो मेरा परसेप्शन चेंज हो रहा है क्योंकि मैं उस पर बहुत ध्यान दे रहा हूँ। When we look at a scene with different levels of illumination, we're able to recognize different colors as the same, a phenomenon called color constancy. Depending on how you initially interpreted the illumination of this photograph, you could see the dress with completely different colors. Here's another illusion you've probably seen before. We have a cylinder casting a shadow on a floor of tiles. It appears that the tiles A and B are different colors. A looks gray, while B looks white. But when you scrutinize the image more closely, you realize that these tiles are in fact identical. The context of the scene and the interpretation we have for what's happening is changing the way we see these colors. Even now, when you know that these colors are the same, you don't see them that way. Okay, last one. Take a look at the circles in the middle. The left circle appears red, and the right circle appears green. But once again, if I zoom in, it becomes clear that each circle is in fact yellow. All of these illusions demonstrate a key insight that Goethe knew. Colors, as we see them, are not merely light. Color is a conscious event resulting from the interplay between the observer and the observed. The French post-impressionist artist Paul Cézanne wrote that color is the place where our brain and the universe meet. So what do philosophers make of all this? Well, there's a number of different takes people have, but in this video I'll be discussing two theories that I think capture the ancient disagreement between Newton and Goethe.
Let's start with the Newton side of things, and one of the most famous distinctions in all of philosophy, John Locke's primary and secondary qualities. Primary qualities are the properties of things as they are in the world, independent of our perception. Take a basketball, for example. The fact that the basketball is spherical is an inherent property of that object, and does not depend on an observer seeing it that way. Then there are secondary qualities, the stuff that depends on the observer, like smell, taste, sound, and, of course, color. The basketball being orange and the sound it makes when you bounce it are each secondary qualities. Objects don't exactly have colors in this way, but they have dispositional properties to give rise to colors. The basketball is not orange itself, but exists in such a way that it appears orange to an observer when they look at it under the right conditions. Some people call this a received view of color, since the properties of the object result in the observer receiving that sense experience. On the other side of things, we have a take that's more in the spirit of Goethe. Evan Thompson, J.J. Gibson, and some others put forward what's known as an action-based ecological theory of color. On first glance, it seems pretty similar to the received view. They still don't consider colors intrinsic properties of things in the world, independent of any perceiver. It depends in part on the perception of the color itself. Color is a relational property, connecting the environment with the perceiving animal. But this view also wants to emphasize the fact that at the end of the day, we're still basically animals. He who understands the baboon would do more for metaphysics than Locke. That quote is from none other than Charles Darwin. Biologists will always tell us that an organism can't be understood in isolation, apart from the world. And in the same way, that organism's environment, or niche, can't be understood apart from the organism. In fact, the animal and its environment are connected in a much deeper way than you might expect. An organism finds itself in an environment, but they don't just hang out there. They interact with their surroundings, based on the physical signals the environment gives them. Through this, they transform the environment, and simultaneously, the environment itself transforms the organism by defining what traits are selected evolutionarily. The organism and the environment co-determine each other. This codeterminacy is a bit of a problem for people like Locke and Newton. For them, perception involves representing items of sense data, which are the immediate objects of perception. These representations stand in for some physical object in the external world. So we aren't actually looking out at the world, we're looking through our representations. This view treats the animal and its environment as separate systems, rather than two components of one system. In the ecological approach to visual perception, Gibson expresses some issues with this take. As animals, our perception is always guided. Perception and action evolve together and are inseparable. Our perception guides the activity in our motor system, and our motor system guides perception. For Gibson, environments have particular relational properties called affordances, things that give us an opportunity to interact with them. Trees, in relation to certain animals, afford climbing. They can be described as climb-upable. The other side of the coin is affectivities, the properties of animals that allow an opportunity for interaction with the environment. Lizards and monkeys can climb things, so they possess the affectivity climbing thing. These kinds of properties are really weird, since they're almost objective and subjective at the same time. It's both a fact of the environment and a fact of behavior. It's both physical and psychological. Gibson ultimately wants to say that the colors we see have lawful correlations with particular ecological properties like affordances. So what's even the difference here with the Lockean or the Newtonian view? They both agree that color depends on the observer, and can't be understood as intrinsic properties of the world, independent of our perception. Neuroscience can model the features of color as we perceive them, so it might be tempting to conclude that object color is really just an illusion, and we can reduce it to neural states in the visual system. But Thompson and Gibson want to avoid this. Instead of situating color exclusively in the brain, they want to take into account the relation with the environment. Instead of color being a dispositional property on the physical level, it's on the ecological level. This view is naturalistic, in that it strives to be in harmony with visual science, but that doesn't mean it wants to reduce animals like humans to collections of neural activity in physical processes. The perceiver is treated as an active exploring animal, rather than a disembodied spectator who just takes the colors in. Colors are connected with affordances and affectivities, especially in their roles as categories and signals to us to satisfy our adaptive ecological needs. They reveal what the environment can do to us and what we can do to the environment. It's also worth noting that the colors we see are not the same colors that other animals see.
I mentioned earlier that humans have 3 types of cone cells in the eye that process color, which makes us trichromats. But this is not the norm. Animals like squirrels, rabbits, some species of fish, and possibly cats and dogs only have 2. Goldfish and turtles have 4, and pigeons and ducks might even have 5. Even within these categories, there's variation. Humans and honeybees are both trichromats, but the colors the honeybee sees is shifted towards the ultraviolet. So why is this a thing? Well, colors aren't just pretty. They help us identify objects in the world by allowing us to segment visual scenes. And they also give us clues about the objects in the scene. It can show us how ripe a fruit is, or how hydrated a plant is. This leads us to Evan Thompson's argument from perceiver relativity. Color vision helps us split up the visual scene into regions of distinct surfaces or objects. Color vision varies considerably throughout the animal world. Therefore, the way we split up a scene is also likely to vary throughout the animal world. Therefore, what counts as a surface in visual perception depends on the perceiver. आपने इसको ध्यान से देखा है तो इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब आप ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप में से किसी ने ड्राइंग की कोई वीडियो देखी है या आपने खुद कभी की है, तो आप शेडिंग करते हो जिस वक्त, तो डार्क और लाइट पार्ट्स एक हिसाब से आप लाइट कितनी कहाँ पे दे रहे हो वो डिसाइड कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये भी एक परसेप्शन है कि आप लाइट देके उसको 2D से 3D कर सकते हो। जैसे कि अभी मेरा जो फ़ोन है उसमें मैं अगर ये वाली लाइट ऑफ कर दूं, पीछे वाली तो है ही नहीं, इसकी वजह से मेरा यहाँ पे भी 3D लग रहा था, मैं इस तरफ से भी, अभी इस तरफ से मैं 2D लग रहा हूँ, लेकिन इस तरफ से मैं 3D लग रहा हूँ बिकॉज ऑफ द लाइट जो कि यहाँ पे लगी हुई है। ये यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है उसकी वजह से। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकते हो। All of this makes sense when you consider evolutionary adaptation. Consider deep-sea fish, for example. When you're that far down in the ocean, things are pretty dark. These creepy little guys are usually monochromats, meaning that they only see the intensity of light, but no color. A lot of them hunt their prey from below, so their light perception is tuned to be sensitive to the maximum contrast to detect movement in their prey. The further up in the ocean you go, where there is much more light around, fish have much more variety in the colors they're able to perceive. Now what about us humans? Since the 1950s, some people have suggested that the way primate perception is configured actually co-evolved with colored fruits, and recent studies support this view too. Species of monkeys like macaques, patas monkeys, and guanons all have similar sensitivities in mid-wave pigment and long-wave pigment. They all look very different and live in very different habitats, but they also all eat a lot of fruit. These fruits, conveniently, tend to be very brightly colored and stand out in the green foliage. Now, why would these fruits be such that they're easy for monkeys to spot? This is obviously great for the monkeys, but it's also in the fruit's best interest. The monkeys pick and eat the fruit, often spitting out the large seeds far away. They also swallow the smaller seeds and excrete them out later, likely much further away. This allows the fruit species to spread far and wide throughout the environment, so it's evolutionarily adaptive for them to look brightly colored for the monkeys, since the monkeys are doing them a solid. The animal and the environment co-determine each other. On an evolutionary timescale, it becomes clear that the colors an animal perceives are not arbitrary. They depend on the participatory relationship between the animal and their environment. The associations we have with colors reveal this harmony between us and the world. Thanks for watching. इस वीडियो से आपको मिल जाएगा कि आपको इमोशन किस टाइप से दिखानी है। जैसे कि आप बेसिक चीज़ें दिखा सकते हो या कुछ एलिमेंट्स की कलर बिल्कुल अपोजिट कर सकते हो अपनी वीडियोस में या अपनी फिल्म्स में या अपनी कलर ग्रेडिंग में। जैसे कि मान लो बनाना येलो कलर का होता है, या मान लो उसको आपने गोल्डन दिखा दिया, गोल्डन सेम लगेगा, लेकिन जिस वक्त उसके पास जाओगे तो ये एक सरप्राइज़ हो सकता है मिस्ट्री में कि वो बनाना समझ के पुलिस वाले वो क्लू छोड़ के चले गए, लेकिन जिस वक्त एक डिटेक्टिव आया तो उसने उस बनाना को देखा, उसको वो गोल्ड कलर का दिखा, तो उसने एकदम से क्लू लिया, उसको एविडेंस बना लिया। लेकिन ये बात पुलिस ने ध्यान से नहीं दी
तो ये एक बहुत बड़ा प्लॉट डाल सकता है स्टोरी में। तो कलर्स आपकी स्टोरी में इमोशन के साथ साथ प्लॉट भी दे सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। अब हम आगे का वीडियोस देख लेते हैं, उससे हम थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएंगे, तो उस पर भी हम ध्यान दे लेते हैं। हाँ, अब मेरा फ्रंट का लाइट आ गया, तो आप ये 3D इफेक्ट देख सकते हो। अभी मेरा लाइट काफ़ी ऊंचा भी है, उसकी वजह से मेरा अपर से 3D आएगा, जो कि अच्छी चीज़ है लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है, फिर भी चलेगा। अभी के लिए मेरा जितना बजट है उसके हिसाब से बहुत अच्छा है मेरे पास सेटअप। तो मतलब उसके हिसाब से मैंने जो चीज़ें ली है वो लो क्वालिटी की है बट काम कर देती है। तो सोच सकते हो किसी टाइप से जुगाड़ चल रहा है बस। तो बाकी आगे चलते हैं अब। लेकिन और ये वीडियो मैंने क्यों रखी है, हाउ टू कलर योर ड्राइंग। तो मैंने जो आपको वाइट वाला इफेक्ट बताया था, तो उसके बाद आपके पास तो खाली ड्राइंग ही बचती है ना। अब आपको भरना क्या है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो वो आप करोगे यहाँ से, इसकी मदद से आप कलर भर सकते हो। What? No. In this week's episode of YouTube Art School, I'll show you in detail how Japanese artists color their drawing, or how they color anime, using a technique called cell shading. How to go from this to that, including all the technical details. Man, it's actually pretty simple, so let's get this part started! Alright, class is in session. Pay attention. So, we're going to start by checking out the main differences between regular shading and cell shading. But first, I'm collecting mandatory donations of either 1 like or 1 sub as payments for the video and all the work that went into it. If you don't pay, your art will be cursed. Good. So to begin, let's just take a look at this here. To understand the cell shading style, we have to realize that it's just like normal shading. But instead of having a smooth gradient between the shadows and the highlights, we'll be dealing with flat colors. Most of the time, a high quality anime will have a base color, a highlight color, and a shadow color. Often a fourth color will often be used for specular highlights like this, or for rim lights too. There are a few more finishing steps after that, but we'll get to that later. But first, let's get started with a clean line art and put this into practice as I go through the entire coloring process for this new drawing that I have. The same process used overwhelmingly by Japanese artists. You'll just need Photoshop or Clip Studio Paint or any other painting software that has clipping masks. That's it. In total, at its simplest, it's going to be a 5-step process. So equip your smudge guard, whip out your pen, and let's get right into it. So with our line art in hand, because cell shading relies on the lines as the foundation for the coloring style, it's a bit less forgiving in that sense. The drawing has to be solid from the start because it'll be really annoying to make changes to it later, as opposed to, let's say, a more painterly approach. So anyways, the first step will be to slap on the base colors. And I'll be using a different layer for each of the main colors. I want all the colors to be isolated on their own individual layers for the clipping masks to work in the next step. We'll see how that works in just a sec, but I just wanted to mention the base colors can be relatively light. For light skin as an example, the base color will tend to stay within the brightest 20% of colors in this range here. Other materials might not be as light, of course, and obviously you'll want overall darker colors if you're going for a darker mood. It's just a ballpark, but you should remember the 20% number since we'll use it to figure out the shadow colors in the next step. Do that. I used the skin as an example in the previous step, so let's start with that to add the shadows. This is where we'll start using clipping masks. So right above my skin base layer here, I'll create a new layer and immediately I'll change that layer into a clipping mask by clicking here in Photoshop. Boom! And in Clip Studio Paint, for those that use that, it's similar, but the option is found here instead. Clip to layer below, and you'll be able to tell that it's a clipping mask by the red bar that appears here. Now back to Photoshop. Clipping masks are nice because they limit the area that you can paint on based on the first normal layer directly underneath. So for my skin here, you can see the paint is only applied to where I painted the base skin color. That's what clipping masks are for, and that's why I painted each base color on their individual layers. Makes more sense now. And that's about as technical as this is going to get. So with shadows, usually you'll get good results if the shadow is around like 20 to 30% darker than the base color. But of course, it's not an exact science. It's just a good starting point that you can actually calculate with the color picker tool. If I color pick my base color, I just have to drag the brightness down here by about 20-ish%. And that should look pretty decent.
What looks a little better though is to drag the hue slider towards red a little bit at the same time. We're essentially warming up the shadow color that way, but just slightly. And I'll do the same for every color, creating a new layer on top of it, converting it to a clipping mask, and painting in the shadows. And as a side note, you can use the same technique for a more painterly style too, you know. The only difference really would be that you blend the sharp transitions between the base color and the shadows with a smudge brush or similar tool. That can look great too, but we're focusing on cell shading now, so let's call the shadow pass done and move on to the next step, highlights. अभी इन्होंने जो पहले एग्जांपल दिया कि हम उसको वार्म कर सकते हैं, तो वो वार्म करने का मतलब ये सनी डे में हो रहा है. शेडोज जो इनकी है वो सनी डे की वजह से पड़ रही है. अगर इन्होंने बोला होता कोल्ड कर रही है मतलब थोड़ा सा हम स्लाइटली उसको ऑरेंज से ऊपर कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है पता है कि आप थोड़ा कोल्ड सराउंडिंग बना देते. कैरेक्टर्स को एक ऐसे सराउंडिंग में डाल सकते हैं आप जो कि कोल्ड हो, विंटर हो या ऐसा कुछ. अभी जो हाईलाइट्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो सनी डे की यूज़ की है. तो अगर ये थोड़े ब्लूइश होते, अभी ये जो है वाइटिश है, वाइट कलर के, तो अगर ये थोड़े ब्लूइश होते तो ये विंटर वाला कोल्ड फील देते थे, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हॉट फॉर रेड फॉर हॉट एंड ब्लू फॉर कोल्ड. तो वही वाला लॉजिक है यहाँ पे, बहुत सिंपल है. Highlights are next, and here we'll be repeating what we did for the shadows once more, creating clipping masks on top of each of the base colors. Now the main difference this time will be the color choice. Starting from the base color we have, we'll have to decide what kind of lighting we want for the scene. Often I'll just consider the sun as the light source, so for any color I pick, I'll select its highlight color by moving the slider towards the color yellow on the chromatic circle in the direction where it's closest, and then brighten that color again by 20 to 30% or more, just depending on how intense you want the light source to be. The sun tends to be pretty intense, so even my darkest color, like Goku's hair, will have relatively light highlights, well over 30% lighter in this case. But like I said, 20 to 30% is a good starting point. Now, how to decide where to place the highlights is a whole different topic though. And I have a class specifically on lighting, so I recommend you check it out if you're struggling with this. I'll put a link to it down in the video description so you can check it out after this class. And before we move on to the next step, as a bonus, if you have Photoshop, you can also add an outer glow layer style to get a nicer transition between mid and light color. Isn't that beautiful? Anyways, now let's move on to the finishing touches. But as a side note, before I move on to the next step, maybe you're wondering why I haven't said anything about the layer blend modes, and it's simply because all I'm using are normal blend modes, just no multiply or overlay for this workflow, just keeping it easy. All right. अगर आपको क्लाउडी डे दिखाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपको करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, वार्म वाइट यूज़ करना पड़ेगा. वार्म वाइट आप अगर यूज़ करोगे उसकी जगह तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा. 2 more quick steps and then we'll be done. This time we're going to whip out the self brush because we'll be adding color gradients to spice up all of these boring flat colors. What's exciting in art is contrast, and flat colors are by definition boring. The solution is just this. With a slightly different color, usually a darker or lighter version, we can break up that flat surface and make it a lot more interesting to look at. Not everything needs a gradient, though, I'd focus on large areas since those needed the most, and you can see it being used here, for example. It's not obvious, but if I use the color picker, you can clearly see the color changing. Here as well, maybe more obvious in this case. ग्रेडियंट टूल से देख सकते हो वो एक रियलिज्म आ जाता है, क्या बोलते हैं, इमेज में. And it just looks way nicer. Before, after, don't you think? Hell yeah. Finally, this brings us to the last mini step, coloring the line art. And if I pull this up again, we can see the lines don't stay black everywhere. Often the artist will tint the line art based on the base color. If it's a darker color, you just leave it black. But if it's a lighter color though, like Bulma's hair, for example, I can simply adjust the line color to be a little bit more similar instead of pure black. Like this works pretty well. And we can also do this when the line is on the side where the light is coming from, like this here. And so to do this, to color your lines, all you gotta do is just lock the alpha on the line art layer so that you're only able to paint on the lines. Or if you really like clipping masks, you could use one here instead too, I guess. But yeah, like I said, this is super quick and it adds a nice layer of polish to the drawing. Right? Very nice. And that's going to be it for this week's class. ये जो अगली वीडियोस हैं ये कॉमनली मिस्टेक्स हैं
कि आप अब कलर ग्रेडिंग में, लाइन आर्ट में या CGI में क्या मिस्टेक करोगे। तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि क्या मिस्टेक आपसे हो रही हैं और उसको कैसे करेक्ट करोगे। तो ये वीडियो आप थोड़े लेट भी देख सकते हो, क्योंकि पहले आपने करना है फिर मिस्टेक्स पे आना है। पहले मिस्टेक्स पढ़ ली हैं, अब आपने की नहीं। क्योंकि अगर मिस्टेक्स का भी आप ध्यान में रखोगे तो आप ये मान लो, अगर आप मेरा करेक्टर बनाना चाहते हो CGI में या ड्रॉ करना चाहते हो या फिर मेरे करेक्टर को कलर ग्रेड करना चाहते हो, मान लो मैं वाइट हूँ बिल्कुल अभी, तो मेरे को कलर ग्रेड करने के लिए आप अगर मेरे मिस्टेक्स ढूंढते रहोगे कि यहाँ पे लाइटिंग मेरी अभी जो है वो ऊपर से आ रही है, तो मेरे यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, यहाँ पे कम पड़ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे शैडोज़ बन रही हैं। तो ये ऐसे ये डार्क सर्कल भी हो सकते हैं, तो वो यहाँ पे शैडोज़ बन रही हैं ये वगैरह वगैरह। और मान लेते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से लाइट नहीं पड़ रही है, तो मेरा चिन्ह कहाँ पे है कोई पता ही नहीं चल रहा है, जबकि मेरा चिन्ह कहाँ, अगर सही तरीके से देखा जाए तो कितना फ़र्क। लेकिन उस वक्त आपको ध्यान भी नहीं आएगा कि यहाँ पे फ़र्क है कि नहीं है। अभी जैसे मैं पास आ जाता हूँ, मेरी टोन जो है वो थोड़ी ब्राउन हो जाती है, दूर जाता हूँ वाइट हो जाती है, तो ये लाइट की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें पता करनी है, अब ये लाइट तो एक ही जगह पे है, मैं मूव कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपका CGI कैरेक्टर मूव ना करता हुआ, सिर्फ आपने एक मॉडल बना दिया है जो कि बिना मूवमेंट के है, क्योंकि आपको कोई काम बहुत फास्ट करना था या एक ही बार ये मॉडल यूज़ करना है इस टाइम पे, तो आपको जल्दी काम करना है, तो ऑफकोर्स आप मेरे मॉडल को मूव नहीं कर पाओगे फ्रीली। मतलब कुछ हद तक मूव कर पाओगे लेकिन फ्रीली मूव नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करोगे, वो सारी मिस्टेक्स इसमें बताइए कि उनको कैसे करेक्ट करना है मिनिमम टाइम लेके। Are you using color properly on your graphic designs? I'm about to show you 4 key warning signs that will help you answer those very questions. Starting with this. Now, if your work has this first warning sign, it might be that certain colors may appear more dominant than other colors, which can be a really good thing when done correctly. But here the issue is that the dominant colors are used in totally the wrong ways. Now, this warning sign is commonly known as poor color balance, and it looks a little something like this. Consider designing the homepage for a website showcasing the latest fashion collection for a brand. Poor color balance might arise if the dominant color scheme overwhelms the page, making it difficult for the users to focus on specific elements such as product images or call to actions. For example, if the background color is too bright or too saturated, it may overshadow the product images or important navigation links, and this results in a disjointed and ineffective user experience. Remember, the key importance of a website is to get clicks and sales. So obviously here, that has been made more difficult with poor color balance. However, poor color balance can actually extend across multiple different designs, and this is how that occurs. Now consider designing packaging for a line of skincare products. Poor color balance could arise if the colors used for each product are not balanced in their distribution across the packaging design. For example, if one variant is presented with bold, attention-grabbing colors, while the other ones are depicted in more subdued tones, it might create an imbalance in visual emphasis, and this might make the brand as a whole not function properly. It seems simple and logical, right? But many designers will actually not consider a balance of color across multiple different designs in terms of saturation, temperature, and tone. Now, if you're creating designs that exhibit the next warning sign, it can lead to your target audience being totally turned off by your work, and the design's message falling utterly flat. You really don't want that. Imagine designing a logo for a health and wellness brand that specializes in yoga and meditation products. Think to yourself, what sort of color scheme would you choose for such a brand or logo? Some designers might opt for warm colors, some perhaps even energetic colors such as red and orange to communicate a sense of well-being and change. However, this is probably almost certainly contradictory to the brand's message of relaxation and peace. Instead, opting for cooler, calming colors like blue or green would be better because it aligns with the brand's values and resonates with the target audience. But that is of course relative to each project and each different brief.
So the warning sign here is inappropriate or inadequate use of color temperature. On the flip side, if you're designing packaging for a children's toy brand, incorrect color temperature could arise if cool, calming colors are used exclusively on the packaging design, failing to capture the attention and enthusiasm of the brand's younger audience. So make sure you know the vibe and also the emotion and tone of your design, and then from there, work out what kind of temperature you need to apply in terms of the color palette. Is it warm or is it cold? Or is it in between? It's really that simple, but also it's really that important. But moving on, does what I'm about to say sound familiar to you and your graphic design career? Let's take, for example, a magazine layout design. There can be a tendency to get carried away sometimes, and some designers will deploy things like random gradients spanning the entire background, or using bright yellow glowing text that isn't actually that legible. Furthermore, the colourful effects overpower the text and images, making it difficult for readers to focus on the content and follow the narrative flow of the magazine itself. This is a classic case of a designer who has gotten carried away with colour use and colour effects, while forgetting the function of the design itself. And to remedy that, simply remember this one small snippet of graphic design wisdom. Color is merely a tool that helps complement the emotion, the tone, and the message of a design. Color is very rarely ever the star of the show, and in fact, it's just one cog in the machine mechanism of a graphic design. Color needs to be used wisely, and the next point in today's video is going to demonstrate that perfectly. Now, there is one way to use color that can make a design look utterly professional, or if it's done incorrectly, it can make a design look really amateurish. I'm pretty sure I know which type of design you'd rather create. So we're just here chilling on FreePic, and let's search for brochures just to demonstrate the next color warning sign. So if you look here, this first design does not exhibit the color warning sign I'm going to talk about soon. But take a close look at this design and try and figure out what has it done correctly in terms of color use. What's really obvious about it? Also, as another clue, this design isn't guilty of the color warning as well. This design has done things correctly. Have you managed to figure out what I'm talking about here? What is that warning sign? Well, if you take a look at this design here, what do you now see to be different than the other two designs? Well, this design uses too many colors, and the colors used aren't cohesively consistent throughout the design. Using too many colors on a design is a surefire way to kill it and its use case and its worth. By using too many colors like this, especially on typography, it's just a visual overload for the audience, and it makes the design appear weak and amateurish. Using too many colors can also spill over to logo design as well. However, when it comes to a logo design, it's kind of a grey area, excuse the pun. Now, I do like this design, and from reading the brief, I understand the logic of the colors. But to me, it makes the design look hectic and just too busy. It's less memorable than if it was a few colors. In fact, if you ask ChatGPT why it's a bad idea to use too many colors on a logo design, it gives 10 strong reasons, including memorability, reproduction cost, flexibility, and so on. Now again, the brief for this design here might justify the use of many different colors, but to me, things seem a whole lot more memorable and efficient with just one or two colors. But hey, I'm a purist, and yes, this design might work well for this brief, but as a general rule, don't use too many colors on your designs. And now, let's quickly put any confusion or lack of confidence to bed and see a step-by-step method for actually selecting colors. So let's say you are tasked with creating the artwork for a website based around mental health awareness, or even to design the website itself. Color Analogy's method requires that we first pick out emotions to target. And for this website here, the desired emotion is empathy and support. You will probably decide that the website should evoke feelings of peace, comfort, and hope for visitors seeking mental health resources and information. And once you have that research, we then look at how colors are typically associated with the emotions of peace, comfort, and hope. And soon we are actually going to flip things on their head. But in this context, warmer soft colors like soothing blues and gentle pastels are often linked to comfort and understanding, while shades of green can represent growth, renewal, and hope. So begin by selecting a base color.
In this case, you might choose a soft, comforting blue as it signifies empathy and understanding. Then, complement this with pastel shades like light lavender or soft pink to represent comfort and compassion. Now these colours can be used for background elements, which creates a gentle and nurturing atmosphere. To inject a sense of hope and growth, add a touch of light green or mint green as an accent colour. Now this colour can be used for call to actions or to highlight important information, symbolising the potential for renewal and positive change. However, here's the complete flip side to all of this. Now, you might actually have determined in the brief that this audience of the website are young teenagers in regard to mental health, and in which case, you might want to increase the saturation away from pastel colours and use things like bright bold orange as a base colour, which will trigger a sense of action and change, which helps with positivity and hope. Share your design with colleagues, clients, or target audience members to gather some feedback. Their perspectives can help you refine and enhance the color palette. उसके हिसाब से अमेज़ॉन का जो आप देखते हो होम पेज, जो अमेज़ॉन शॉपिंग वाला ऐप है, तो उसका होम पेज कितना अलग है, एकदम वाइट। अगर आपने डार्क मोड भी ऑन किया हुआ है तब भी आपको वाइट दिखता है। तो वाई अमेज़ॉन जो है वो चूज़ करता है वाइट को। Always keep in mind the accessibility of your design, especially if it's intended for digital platforms. Make sure the text remains legible and the color choices adhere to accessibility standards. आगे की जितनी भी कलर थ्योरी वाली वीडियोस हैं वो हम देखेंगे। पहले मैं सोऊंगा, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, तो तब तक रोक देता हूँ मैं वीडियोस वगैरह को, और इसके बाद मैं एक वीडियोस डालूँगा जिसमें ये सब कुछ शॉर्ट में होगा। शॉर्ट में नहीं होगा, मतलब उसमें जो मैं ये वीडियोस यूट्यूब की लगा के आपको दिखा भी रहा हूँ साथ में, बस वो वाला पार्ट काट कर दूँगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि इम्प्रूव हो जाएगा कि आप जल्दी चीज़ें कैच कर पाओगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो ये वाली देखते हो तो इससे आप एक कनेक्शन बना लोगे मेरे साथ भी और कलर थ्योरी के साथ भी, तो उससे आप इम्प्रूव कर पाओगे। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप मेरे साथ देखो, उसको लिखो, इम्प्रूव होते जाओ। मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको कम टाइम लगेगा। चाहे आप मेरी बड़ी वाली वीडियोस देखोगे उसमें भी आपको कम टाइम लगेगा, मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं सुबह से अभी देख रहा हूँ, अभी 3 बजने वाले हैं, तो 3 o'clock होने वाले हैं, वो भी आफ्टरनून, यानी मतलब 15 बजने वाले हैं। तो ये काफ़ी टाइम मैंने दिया है इसको। लेकिन आपकी वीडियोस कितनी होगी, 7 घंटे की या 8 घंटे की, अभी रिकॉर्ड भी है, उसको मेरे को एडिट करना पड़ेगा, वो शॉर्ट हो जाएगी, बहुत शॉर्ट होगी। तो उससे ये वीडियो इम्प्रूव हो जाएगी व्यूवर्स के देखने के लिए। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप यही वाली वीडियो देखना, अगर सीखना नहीं है तो अगली वाली वीडियो, मतलब सीखना है लेकिन फास्ट सीखना है और ज़्यादा बेसिक नहीं जाना है, ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं चाहिए, तो आप सेकंड वाली वीडियोस के साथ चले जाओ। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये होगी कि आपको वो वीडियो बार देखनी पड़ेगी। इस वीडियो का ये है कि आप अगर इसको ध्यान से देख लोगे एक बार तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगी। मैंने इतनी सारी एग्जांपल्स दे दी है कि ये आपको भूलेगी नहीं। तो नींद पूरी हो चुकी है मेरी, देख सकते हो। अब अगला टास्क पूरा करते हैं जो लिया हुआ है हमने। Color. It plays a vital role in design and everyday life. It can draw your eye to an image, evoke a certain mood or emotion, even communicate something important without using words at all. So how do we know which colors look good together and which ones don't? The answer is simple. Color theory. Artists and designers have followed color theory for centuries, but anyone can learn more about it. It can help you feel confident in many different situations, whether it's choosing colors for a design or putting together the perfect outfit. All it takes is a little insight, and you'll be looking at color in a whole new way. Let's start at the beginning, the very beginning, with a refresher on the basics. Remember learning about primary and secondary colors in school?
then you already have some knowledge of color theory. Red and yellow make orange, yellow and blue make green, and blue and red make purple. If we mix these colors together, we get even more in-between shades, like red-orange and yellow-green. Altogether, they form what's called a color wheel. You can probably see where it gets its name. ये वीडियो एक रिवीजन है सिंपली जो हमने पीछे तक पढ़ा है अभी उसको बहुत जल्दी इसको पुट टुगेदर किया है। और सबसे मेन बात कि अगर आप देखोगे तो कलर व्हील की ह्यू है जो यानी कि कलर्स हैं जो उनके तो हमने रूल्स पढ़ लिए, लेकिन जो टिंट है या टोन्स है शेड्स इन तीनों के हमने कोई रूल्स नहीं पढ़े हैं, तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? Now, let's take it one step further with hue, saturation, and value. These are terms you might never see in daily life, but they're the key to understanding more nuanced colors, like all those little paint chips at the home improvement store. Hue is the easiest one. It's basically just another word for color. Saturation refers to intensity. In other words, whether the color appears more subtle or more vibrant. Value has to do with how dark or light the color is, ranging from black to white. As you can see, this gives us many different shades, from a deep reddish brown to light pastel pink. So how do we put this all together to create professional-looking color schemes? There are actually tried and true formulas based on something called color harmony that can help. All you need is the color wheel. The easiest formula for harmony is monochromatic because it only uses one color or hue. Just pick a spot on the color wheel and use your knowledge of saturation and value to create variations. The best thing about monochromatic color schemes is that they're guaranteed to match. An analogous color scheme uses colors that are next to each other on the wheel, like reds and oranges, or cooler colors like blues and greens. Don't be afraid to play with the palette and create your own unique interpretation. That's what these formulas really are, merely starting points to help guide and inspire you. Complementary colors are opposite each other on the wheel, for instance, blue and orange, or the classic red and green. To avoid complementary color schemes that are too simplistic, add some variety by introducing lighter, darker, or desaturated tones. A split complementary color scheme uses the colors on either side of the complement. This gives you the same level of contrast, but more colors to work with, and potentially more interesting results. A triadic color scheme uses 3 colors that are evenly spaced, forming a perfect triangle on the wheel. These combinations tend to be pretty striking, especially with primary or secondary colors, so be mindful when using them in your work. Tetradic color schemes form a rectangle on the wheel, using not 1 but 2 complementary color pairs. This formula works best if you let one color dominate while the others serve as an accent. There are a few classic do's and don'ts when it comes to color. For instance, have you ever seen colors that seem to vibrate when they're placed next to each other? The solution is to tone it down, literally, and there's a simple way to do it. Start with one color and try adjusting its lightness, darkness, or saturation. Sometimes a little contrast is all your color palette needs. अभी इन्होंने बताया कि अगर आप 2 कलर रखते हो वो एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आप सिंपल सी एक ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि आप एक की शेड सैचुरेशन जिसमें वाइट्स हो ब्लैक्स ना हो, वो वाली चीज़ें आप या एक चीज़ या सारों को थोड़ा थोड़ा कम करके एक्सपेरिमेंट करके आप डिज़ाइन को बेटर कर सकते हो. Readability is an important factor in any design. Your colors should be legible, engaging, and easy on the eyes. Sometimes that means not using color, at least not in every little detail. Neutral colors like black, white, and gray can help you balance your design, so when you do use color, it really stands out. Every color sends a message. It's important to consider the tone of your project
and choose a color palette that fits. For example, bright colors tend to have a fun or modern vibe. Desaturated colors often appear more businesslike. Sometimes it just depends on the context. You'd be surprised how flexible color can be. You can find ideas for color schemes in all kinds of interesting places, from advertising and branding to famous works of art. You can even use a web resource to browse color palettes or generate your own. Even experienced designers take inspiration from the world around them. There's nothing wrong with finding something you like and making it your own. Everywhere you look, there's color, color, and more color. It can be intimidating to use it in your work, but it doesn't have to be. Just keep experimenting and remember what you've learned about color theory. Soon, choosing great-looking colors will feel like second nature. बेसिकली आपको रिवाइज हो गया होगा क्योंकि मेरे को तो भूलना था क्योंकि मैं सोया था, तो ये एकदम फ्रेश से पूरा मेरे को याद आ गया मैंने क्या क्या पढ़ा था। तो ये वाला वीडियो का और कोई मतलब नहीं है, इसको अभी मैं बाहर कर दूँगा। तो ये वाला प्लेलिस्ट में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे जो आ रहा है वो देख लेते। अब जो ये वाला वीडियो है ये इसलिए यहाँ पे डाला है क्योंकि ये यहाँ पे एक्सेप्शनल कलर यूज़ हुए हैं। यहाँ पे कोई कलर स्कीम फॉलो नहीं हो रही है, कोई सैचुरेशन वाले लॉ फॉलो नहीं हो रहे। ये मतलब फॉलो हो रहे हैं लेकिन थोड़े क्या बोलते हैं लॉज को बेंड किया गया है या रूल्स को बेंड करके यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, तो वो आप देख सकते हो क्या। Look at this scene from Aladdin. All this for a loaf of bread? Whoa! In this scene, we have a mix of intense blue, yellow, and even bright red. Those are primary colors, and primary colors are not known for getting along. But if somebody was to walk up to me on the street and say, "What is the basic color palette of Aladdin?" as they tend to do, I would have to say blue, yellow, and red. The animators built an entire movie off the most difficult to work with colors, and it is beautiful. By subtle adjustments, careful proportions, and deliberate control of the colors, the makers of Aladdin put together one of the most beautiful films in the entire canon of animation. A film that not only wrangles the most intense colors into harmony, but uses the colors brilliantly to help tell the story. So let's dig into how the color works in Aladdin. First, let's step back and look at the film from a distance. Each scene could be categorized as either a blue scene, a red scene, or a yellow scene, although the yellow scenes are a lot more subtle than the others. You'll also see a lot of these transition scenes where it starts in one color and ends in another, but we'll talk about those shortly. Each of the scenes will contain some or all of the three colors, but the proportions are not equal. One of the colors in the palette will be clearly and obviously dominant. This is the first step in controlling competing colors. Make one of them a lot bigger than the others to discourage conflict. I mean, if I have a cage of 3 gorillas and all 3 of them are the same size, they will probably fight with each other for dominance. But if one of those gorillas is the size of an SUV, you're probably going to have an enduring peace. This is a basic hierarchy of color as it manifests in nature. Because light itself is not neutral, it carries a color too. Some colors within a natural scene will be amplified because they agree with the light color, while others that disagree with the light color will be suppressed or neutralized. But in addition to the harmony that comes from having one color be dominant over the others, there's also a narrative benefit here to what happens when most of the scene is one color. It makes it very easy to guide the viewer's eye. Look at this frame from one of our yellow scenes. Aladdin is walking through piles of golden treasure, and the presence of the blue carpet beneath our feet creates an immediate emphasis, telling you, watch this, this is important. Now watch the very next scene. Aladdin and Abu walk into this cold blue cavern
where the lamp is that they're looking for. Everything in here is blue. It's so blue that the animators inject a little bit of warmth into Aladdin's pants in the wide shots just to tug on your eye enough to help you find the figure. Even though that warmth isn't there before or after that shot, because the motion is enough to do the job. But then Abu's eye is captured, just like ours is, by the only red thing in the room, which both draws us in and gives us a tangible sense of threat. This is one of the narrative benefits of using a hierarchy of color. By having one color be dominant, it increases the contrast of using one of the other ones. Much easier to create contrast than if all the colors were represented equally within the frame. Through this, the animators can guide the eye throughout the scene and help you to focus on things that move the story along. Famously, the 2015 film Mad Max Fury Road placed the action in the crosshairs of the camera. The key points of movement and story took place dead center of the frame, and this meant that you never had to search the frame during a series of fast cuts to find out what was going on. It helped the film keep an action pace and scalding post-apocalyptic color, all in tune with its themes, without leaving the audience confused with visual chaos. Each of these films are using the tools that are allowed by their genre, by their pace, by their tone, to deliver the same outcome. Aladdin has much slower cuts. It has a high contrast color palette. It provides the opportunity to let the viewer search the frame to find what's most important. And we're guided primarily by motion and color. Now, what about those instances where the dominant color changes halfway through a scene? Let's take an example and go back to the blue cavern. Watch as Aladdin picks up the lamp, as Abu picks up the red gem. The tension rises rapidly, and then the cold, forbearing room erupts into heat and danger. In their escape, the trio of Aladdin, Abu, and the flying carpet fly just ahead of the color shift, with those brilliant shots of flight over the characters' shoulders. Well, except for the carpet, which has no shoulder. Showing the glow of red behind them, and giving that warning of danger right on their tail. This one isn't rocket science. The change in color amplifies the change within the scene. Just like a change in the music, or in the motion, or in the pace of editing. The scene started out as slow exploration, and then it became urgent and deadly. Now, the color doesn't affect that change by itself. It's not even close. Let's not fall into the trap that people so often do when they analyze art, trying to pin down the one thing that either makes something work or makes something fail. A piece of artwork is a massive, swarming pile of variables. Creating art is organizing all of those variables towards a collective goal, orienting them to agree with one another towards that goal, rather than contradicting that desired outcome. The color here has joined the choir. It's offering its own unique level of support and harmony to the scene, and helping to tell the story better. This is why you can't really look at each color and assign it an emotional value for the film. The blue scenes in Aladdin are not all cold and lonely and sad. Look at the magic carpet ride, one of the most romantic moments you can find in all of animated films, featuring one of the most bright and uplifting and beautiful songs Disney ever recorded, which I cannot give you much to listen to because I am afraid of copyright strikes. But this scene is as blue can be. It's essentially the exact same palette as much more quiet and somber moments of the film, or when Aladdin is tossed into the sea with weights on his legs to drown him. I do love 90s children's movies. But my whole point is just that we shouldn't oversimplify or attribute unwarranted narrative power to color. It is a contributor, an enhancer, an intensifier, but it is not the final judge on how the viewer will feel. Color is very flexible in that way. We do have psychology associated with color based upon common human experience, but it's very rare to encounter a color in a vacuum with no other context or no other variables around it. So we don't often get clear emotions from color, rather we get a vague sense of high energy
and low energy. Warm colors have more energy, cool colors have less. The fact that I'm even using words like warm and cool to describe colors, and you're understanding it implicitly, is kind of an indicator of what I'm talking about. And I know that dichotomy sounds extremely vague, and that's because it is vague. The context around a color can steer you all over the emotional map. And that's how a color palette can give us cold, lonely, and threatening, and also romantic and beautiful and sweet. Now, I am sure that some of you have to be bewildered as to why at the beginning of the video I simplify the color palette of Aladdin down into red, blue, and yellow. Look at the opening credits, and within a few seconds you'll say, "That's purple. That's purple. Your video is debunked." There are a host of colors within Aladdin's color palette that I would not call blue, yellow, and red. You can find plenty of orange, magenta, brown, maroon, purple, etc., etc. But if we look at the typical color palette on the color wheel, it might clarify why I characterize it the way that I do. The space of color used for the film are functionally the three primaries, and then bridge colors between them, generally excluding greens. Green definitely shows up in the film, but we will talk about it later. So let's go back to our example of shrinking some colors and increasing the size of others in order to help them get along. You know what helps them get along even better? Peacemaker colors. Their personalities are not as strong, and they help to keep the more intense colors away from each other. So in our gorilla cage, you have a bunch of extra gorillas who are incredibly virtuous and humble. Now look at this moment where Aladdin enters into the gaping maw of the giant desert sand tiger. I have always thought of that as a tiger, but now in recording this video I realize I don't know that it is. Tell me in the comments or something. The three primary colors are present, but their edges are softened by changes in hue, saturation, and value. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सबसे प्राइमरी एग्जांपल है कि आपने अगर प्राइमरी कलर यूज़ किए हैं तो उसको आप एडजस्ट कैसे करोगे. They do not hit each other with full force. Rather, these intermediary colors absorb the blow and foster a harmony within the frame. Even this proximity of intense colors is rare, however. The film seems to use them most when danger is afoot, such as when Aladdin is dangling over the abyss about to receive his eternal reward. Your eternal reward. Or later in the film, when Jafar just starts blasting. To your precious Prince Ali! One little side note here about the scene where Jafar is in disguise. In one moment, his teeth flap around like spider legs. And then when he pulls off his beard, his teeth go back to normal. Those weren't fake teeth. It was a fake beard. Some people have control of a muscle that lets them move their ears. Does Jafar have the equivalent of that for his teeth? Anyway, that's always bothered me. But if we take another scene from the film, we can see how a typical color scheme plays out. Watch Jasmine walk through the market. Here, the dominant color is red, and the second most dominant is yellow. The majority of other hues bridge between red and yellow. And then blue, indigo, and purple are used sparingly in the background as a kicker or a rogue color. It's the color that gets added in small measure, like seasoning. यही वाला अगर आप सैम लॉजिक यूज़ करोगे तो ब्लेड रनर 2049 में भी सैम लॉजिक यूज़ होता है कलर्स का. उधर भी प्राइमरी कलर्स यूज़ किए गए हैं, लेकिन थोड़ा किस टाइप से उनको आपस में स्मूथ किया है, वो काफ़ी सारे कलर्स और यूज़ हुए हैं उन दोनों की बाउंड्रीज को स्मर्ज करने के लिए या स्मूथ करने के लिए. This is a basic formula for many scenes in the film. One color takes the role of captain, another is like the first mate, the crew is all between them, and the leftover of the three primaries is the stowaway. The metaphor has many problems anyway. For one, it doesn't actually apply to quite a few scenes in the film. For example, on the balcony scene after Jasmine and Aladdin return from the carpet ride, the blue is hardly a stowaway. It's more like the ship itself providing the backdrop for the scene, even though the basic dichotomy is yellow and red. So I certainly don't want to fall into the trap of oversimplifying the color work on this film just to fit a metaphor. Instead, let's take it loosely. And that the basic principle in play here is that there are roles for each of the colors
in each scene. Those roles shift throughout the film, and each color is also modified, depending on its role, in relation to the other colors. Just look at the Prince Ali parade from the midpoint of the film. I would call this a yellow scene for its warmth, but it's more of an orange, really. Reds are a subsidiary role, mostly occupying the shadows, but the blue, which is a large part of the frame, diminishes by brightening, like the rest of the scene, desaturating, and warming, which is what happens when you throw just a little bit of yellow into blue. So this is our basic pattern. Two colors, bridge between the two, and then one or a few variations of the third color playing a minimal or background role. ये वाला कॉन्सेप्ट जो पीस मेकर कलर का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा याद रखें कि जब भी आप प्राइमरी यूज़ करें या कोई भी अगर और कलर्स भी यूज़ कर रहे हो, अगर वो कभी मैच ना कर रहे हो तो या तो उनकी आप टिंट कम कर सकते हो, वाइब्रेंस क्या बोलते हैं, सैचुरेशन कम कर सकते हो, वाइट ऐड कर सकते हो एक कलर में, तो उसकी वजह से भी वो मैच हो सकते हैं कलर आपस में। अगर वैसे नहीं हो रहे हैं तो आप स्मूथ कर सकते हो उन दोनों के बीच में जो लाइन है। तो ऐसे देखो, कलर व्हील में अगर आपने रेड और येलो चूज़ किया है, रेड और येलो चूज़ किया है, तो अब देखो इसके बीच में 3 कलर और बच गए। अगर आपने कोई बड़ा कलर व्हील देखा है, उसमें 5 कलर भी बच सकते हैं, तो वो 5 कलर किस काम आएंगे? वो स्मूथिंग के काम आएंगे। तो ये कलर्स जो मिलना है, ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको या रेड की आप सैचुरेशन कम कर करके यहाँ पहुँच सकते हो, या टिंट कम ज़्यादा करके यहाँ पहुँच सकते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं, कलर व्हील जिस टाइप से काम करते हैं, जिस टाइप से उसके कलर है, उस टाइप के कलर यूज़ करके उनको स्मूथ कर सकते हो। And these changes are not random. They serve the story by oftentimes being our first impression of a scene, giving us a glimpse of the tone of a given moment. So we watch as Aladdin escapes the guards, cracks jokes, sings songs, and moves us through the city at a breakneck pace. But then he slows down, and the color palette slows down. He sits down with his bread. He sees hungry children. Our heartstrings are pulled. He gives them his share of the bread. He acts quietly and virtuously. Likewise, we see him save a child from the whip of one of Jasmine's snobby suitors, and the color palette has returned to electric. जो एग्जांपल दिए है कि यहाँ पे पैटर्न क्या है जो यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न है कि आप रेड की सैचुरेशन कम कर दो, उसके बाद जो येलो है उसकी सैचुरेशन कम कर दो, तो जो सबसे कम है उसकी सैचुरेशन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि ब्लू सबसे कम होता है अलादीन की, जो पुरानी वाली 90s वाली मूवी है, तो उसमें जो ब्लू कलर है वो सबसे कम होता है। तो वो क्या हेल्प करता है आपको कि कैरेक्टर की जो डिटेल्स है वो अगर आपको दिखानी है वो बाहर निकल के आती हैं एकदम। और जो पर्पल कलर है यूज़ किया गया है वहाँ पे, तो वो हेल्प करेगा आपको किस के लिए, आप जो 3 प्राइमरी कलर यूज़ कर रहे हो उसको एडजस्ट करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए, उनमें पीस बनाने के लिए वो पीस मेकर कलर आ जाता है। But then the scene ends as he's hit with these dismissive insults. You are a worthless street rat. And the color slows down again, bringing forward soft magenta and blue, and allowing the yellow to evaporate into non-existence, dropping the energy by its absence. So we've seen how the Aladdin color palettes are built, and we've seen how the color contributes to the story. But there is one part of the film's color that I have not addressed. There are 3 scenes that simply do not follow the color pattern of the rest of the film, and they are scenes that use green. For clarity's sake here, I'm not counting the scene just prior to the magic carpet ride where we see trees in the background because they're so heavily influenced by the blue that they basically have no influence on the color palette. I'm also not counting the brief glimpses of trees that we get in the scene later in the film where Aladdin is grieving over his dishonesty. He's feeling guilt over his lies to Jasmine. Here the green is so influenced by yellow that it's not really having an effect on the color palette. Instead, I'm looking at 3 different scenes throughout the film, spread equally throughout, one at the beginning, one at the middle, and one close to the end, where the Sultan chastises Jasmine for chasing off a suitor, where the genie prepares Aladdin for his role as Prince Ali,
and where Jafar escapes the guards and Aladdin begins to feel guilt for his lies. So अलादीन से आपको ये भी कंक्लूजन मिल जाएगा कि रेड सबसे ज़्यादा एनर्जी शो करेगा, फिर येलो आएगा और फिर ब्लू आता है. Let's look at the first one on that list. The color is very warm, so I was initially tempted to just lump it into the broad category of yellow scenes just to keep things simple. But that doesn't really address this palette properly. There's plenty of warmth, but this is much more the local color of objects. Blue, orange, green, yellow, red. This is a little bit of everything. It's just knitted together by warmth. The second scene with Genie is the same palette. The more I thought about it, the more I began to think about those two scenes as grounding scenes. In general, they handle quite a bit of exposition, and they are very important for setting the trajectory of the narrative. They're also not urgent or romantic or sad or action-packed musical numbers. They are characters and light jokes and expository dialogue. There's no menace here. All of the characters are loyal to each other, and nothing really feels like it's at risk. I think these two scenes ground the narrative and also ground the color palette. It gives us some relief from the dramatic light and color from the rest of the film. It gives us a kind of normal by which to reference everything else, which arguably makes it all the more potent when that intense dramatic color reemerges. On that note, the spacing, with one of these being at the beginning and one at the middle of the film, is perfect. जो ग्रीन यूज हुआ है हमारा अलादीन के लास्ट सीन्स में या कुछ फर्स्ट सीन्स में नहीं, हाफ मूवी के अंदर यूज होना स्टार्ट हुआ है ग्रीन. तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि वो स्लो डाउन करता है स्टोरी को, ऑडियंस को टाइम देता है और चीज़ें देखने का, और चीज़ें महसूस करने का, और इमोशन महसूस करने का. तो जिस वक्त वो ग्रीन ख़त्म हो जाता है, लास्ट के सीन्स आते हैं, वो भी आपको थोड़े पीसफुल, उसकी वजह से ये होता है कि एक तो व्यूअर पीस में भी चला गया, उसको एक हैप्पी एंडिंग मिल रही है. दूसरा वो एक और रिजल्ट पा रहा है कि जिस वक्त अगर क्लाइमैक्स थोड़ा ड्रामेटिक हुआ, फाइट्स हुई, तो उसमें वो कलर पैलेट जिस वक्त वापस से आएगा वो व्यूअर को एक्साइट कर देगा. अगर वो पूरी मूवी में सेम कलर पैलेट यूज़ करते रहते जो है रेड येलो ब्लू वाला, तो उसकी वजह से क्लाइमैक्स उतना हैवी नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता. लेकिन अलादीन का क्लाइमैक्स भी अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ द ग्रीन कलर. तो ग्रीन कलर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है अलादीन में, चाहे वो बहुत कम फ्रेम्स में आया हो, बहुत कम टाइम पे ग्रीन आया हो, या उस पर शेड्स किसी वार्म कलर की पड़ रही हो या किसी और कलर की पड़ रही हो. लेकिन ये जो स्टोरी को हेल्प करता है, ये स्टोरी को जो हेल्प करता है ये काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आप भी ध्यान में रख के क्लाइमैक्स वगैरह में लिख सकते हो या बना सकते हो आप थोड़ा. और कलर ग्रेडिंग की बात रही तो कलर ग्रेडिंग में भी आप यही कर सकते हो. अगर प्लॉट 1 आया, प्लॉट 2 आया, तो उसमें आप सारे कलर यूज़ करोगे. लेकिन उससे बाद क्लाइमैक्स को प्लॉट से अलग करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप ग्रीन डालो, उसको पीस में लाओ, हैप्पी एंडिंग की तरफ लाओ, फिर आप दोबारा से अपना जो कलर पैटर्न है जो आप फॉलो कर रहे हो उसको क्लाइमैक्स में डालो, जिसकी वजह से आपकी जो वीडियो होगी या मूवी होगी या फिल्म होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी. For this. Now look at the last of those three scenes. This one is not like the others narratively or in terms of color. There is real conflict here and action, and the color is incredibly soft and manages the particular parts of the palette, even on costumes and skin that we've seen before, in a different way. This turquoise color appears. The Sultan's trimmings are tilted towards green, and a red underlying tone gives us the one and only example of a green-red color complement in the film. It's one of my favorite palettes of the entire movie, and it really only shows up here. We get maybe a tiny glimpse of something you could argue is like that on the balcony scene where we see Jasmine's bedroom, but this scene is really unique, and it makes no sense to me. It breaks the pattern that I've seen throughout the entire film, but I wanted to end on it for this reason. It confuses me. Critique, like I'm doing in this video, is an exploration. It is criticism, meaning the close analysis of a work
to judge its many qualities, as a way to get to know a work better, to learn from it for my own work, and also to appreciate it more. But that means that my analysis can give me many answers, but it can also leave me with questions that I've never thought to ask before. Why is the color in this scene so different? I wonder if there's a story behind it, if it's random, or if there's some purpose to it that I just haven't noticed. अब जो क्लाइमैक्स में इन्होंने बताया कि वहाँ पे वो जो कंटिन्यूटी है, पैटर्न है, उसको ब्रेक कर देता है, उसकी वजह से भी व्यूअर्स जो है ना वो सरप्राइज हो जाते हैं क्लाइमैक्स में, उनको ज़्यादा मज़ा आने पड़ जाता है। देखो अगर आप पूरी वीडियो में 4-5 कलर दिखा रहे हो जो मेन है, ऐसे बीच में सॉफ्ट कलर्स काफ़ी होते हैं, लेकिन जो मेन 4-5 कलर दिखा रहे हो, अब लास्ट क्लाइमैक्स में आपने सटल कर दिया पूरी मूवी को, फिर आपने क्लाइमैक्स में उसको दोबारा से आपने अपने क्या बोलते हैं स्टोरी कैरेक्टर्स को एक एनर्जेटिक दिखाना है, उसकी वजह को उसके लिए आपको पुराने कलर ले आए, अब आपको और ज़्यादा एक्साइट करना है तो आप नया एक कलर डालोगे उधर, तो उसकी वजह से ऑडियंस एक्साइट हो जाती है। ये सिंपल है, लेकिन अगर आपको इसको डालना है या कैसे आप अपनी आर्ट में डालोगे इसको, तो वो बहुत मुश्किल है। मतलब इसको समझना कि ये क्यों डाला है वो आसान है, लेकिन अब इसको आप कहाँ एडजस्ट करोगे वो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए उन्होंने मूवी में थोड़ी थोड़ी जगहों पे उसको क्या बोलते हैं एज अ शैडोज़ या हाइलाइट्स की तरह यूज़ किया है टर्कोइज़ को, और फिर एकदम से जैसे ग्रीन ख़त्म होता है तो ग्रीन जो है ना वो टर्कोइज़ के नज़दीक आता है कलर भी में, उसकी वजह से वो उसको हेल्प करता है पूरा एक अलग एटमॉस्फेयर देने के लिए। यानी आप मान सकते हो क्लाइमैक्स में आपने ग्रीन को रिप्लेस कर दिया टर्कोइज़ से, क्योंकि ग्रीन एकदम पीस दिखा रहा था आपका, सिंपल। अब जो अगली मूवी है उसका हमने थोड़ा मतलब उससे पढ़ने की कोशिश की है कि हमें कलर्स के बारे में क्या पता चलता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है ना वो इस वीडियो से पता चलेगा सैचुरेशन कैसे यूज़ करें और लाइट और शैडोज़, हाइलाइट्स और शैडोज़ कैसे यूज़ करें। तो ये बेसिक अभी अब कलर पूरा ख़त्म हो चुका है, कलर का बस आपको एक एडवांस लेक्चर लगाना पड़ेगा, उससे बाद आपको कलर्स पढ़ने की मैक्सिमम टाइम ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, वीडियोस देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो कलर ख़त्म हो जाएगा। When the animation process for Netflix's Klaus began, it looked something like this. It eventually started looking like a pretty impressive 2D film. But then, the animators went one step further to create a film that looked like this. Suddenly, the characters looked three-dimensional. But unlike most animated movies these days, the characters in Klaus aren't CGI, and can't even be considered 3D. It's all just a trick of the light. About 300 people, including 40 animators, worked on the movie Klaus, which took over 2 years to make, and it was completed under the wire, just 1 month before it premiered on Netflix. So why did it take so many people and so much time? To understand, we have to go back to 2010. Long before Klaus was nominated for an Academy Award, to when director Sergio Pablos came up with the idea. Because his story was about the origin of Santa Claus, it appealed to nostalgia. And he thought a nostalgic 2D animation style, like we saw in the 90s Disney films, would be a better fit for the story. But he also wanted to advance the look. So his team at SPA Studios in Madrid added a few new crucial steps to the animation process. I never looked at 3D as an evolution of 2D. I looked at it as a split, like there's a new way of making animation now. First, they storyboarded the script and made a cut using temporary voices for the characters. They swapped these out later once the real cast was recorded. अगर आप में से कोई एनिमेशन में जाना चाहता है तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो, उन्होंने पहले स्टोरी बोर्ड तैयार किया, फिर उस पर एक वॉइस ओवर दिया बेकार सा, मतलब प्रोफेशनल नहीं था, बिल्कुल हल्का हल्का, ताकि कैरेक्टर समझ आए, उसके इमोशन समझ आए थोड़े होते, उसकी वजह से वो अब एम्फसाइज कर पाएंगे उसके एक्सप्रेशन कैसे रखने। लेकिन अगर आप देखोगे उससे बाद उन्होंने ड्रॉ करना नहीं स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने रियल आर्टिस्ट जिनकी उनको आवाज़ चाहिए थी या वॉइस आर्टिस्ट थे, जो मान लो कोई भी हो तो उसने किया, आप खुद अगर वॉइस आर्टिस्ट हो
तो आपने खुद पहले वॉइस ओवर करना है, फिर उसके ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। मतलब आप समझ सकते हो कि आपको एक एक्स्ट्रा फ्रेम भी वेस्ट नहीं होगा, आपकी स्टोरी भी पूरी टेल हो जाएगी। क्योंकि जो एनिमेशन है वो इम्पोर्टेंट कैसे है, एनिमेशन में कुछ डिफरेंट नहीं है, वो भी स्टोरी बताता है, मूवीज़ भी स्टोरीज बताता है। तो लोग एनिमेशन देखने के लिए आ सकते हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ एनिमेशन देखने के लिए है, वो सिर्फ स्टोरी देखने के लिए आ सकते हैं। चाहे वो कार्टून की स्टोरी हो, चाहे वो मूवीज़ की स्टोरी हो, चाहे वो न्यूज़ की स्टोरी हो। न्यूज़ में भी आप देखो कहीं पे कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो एक टाइप से स्टोरी में रिप्रेजेंट करके या स्टोरी की तरह हमें दिखाया जाता है। कि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपने जो बोल रहे हो वो उस वक्त पे बंद हो रहा है मुंह या खुल रहा है। मैं अपनी वीडियो के जो सिंगिंग है, लिप सिंगिंग है और वॉइस सिंकिंग है, वो अभी नॉर्मली है क्योंकि ये रॉ फुटेज है। मैं थोड़ी देर के लिए एडिट करके ये वाला पार्ट जो है वो अलग कर दूँगा, थोड़ा सा डिफरेंट कर दूँगा, थोड़ा सा या ऑडियो को पीछे कर दूँगा या वीडियो को, जिसकी वजह से मैं सिंक में नहीं रहूँगा। फिर देखना आप कितना अजीब लगता है। The next step was layout, where the team designed backgrounds and figured out the placement of the cameras. Animating the characters and coloring the backgrounds happened simultaneously. The end goal was to have both blend together seamlessly and look like they're part of the same world. The characters were all hand-drawn using digital tablets and a program called Harmony by Toon Boom. The animators used live-action reference videos of themselves as a guide. The initial sketches were very rough, as you can see here. यहाँ पे देख सकते हो रफ ड्राइंग में आप देखोगे वो स्क्रैप्स हैं जो कि क्लीन है, लेकिन वो एकदम शार्प नहीं है। वो आपको बस एक एज दे देते हैं कि ये हाँ लिविंग कैरेक्टर है स्टोरी लाइन में। जब क्लीन किया उसका तो उसकी लाइन आर्ट बिल्कुल क्लीन है। ऐसा एनिमेशन में बहुत कम होता है, क्योंकि एनिमेशन में जो पीछे वाली चीज़ें हैं उनमें लाइन आर्ट पतला होता है, जो आगे है उनमें लाइन आर्ट मोटा होता है। लेकिन वैसा इधर क्लाउड्स के केस में लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जिस वक्त वो 3D वाले इफेक्ट डालेंगे लाइट की वजह से जो वो 3D वाला इफेक्ट डालेंगे क्लाउड्स के ऊपर, वो लाइन आर्ट को अलग लेवल पे ले जाएगा। उस वक्त आगे आप देखते जाओ, इस चीज़ को नोटिस में रखना आप। But there was a cleanup stage in which artists refined the drawings with crisp, bold lines. Then they painted the characters with basic flat colors. Here, everything still looks very 2D, but they will soon bring the characters to life with a very important addition usually reserved for 3D animation: lighting. His team tested out a new method of lighting 2D characters and released a 2-minute, 30-second long proof of concept teaser back in 2015. The proof of concept looked good and secured them a deal with Netflix, but the process was too labor-intensive. So they partnered with a French company called Les Films de Poisson Rouge to help advance the technology, which they called CLAS, short for Klaus Light and Shadow. Poisson Rouge was able to make the tool much more efficient and easier for the artists to work with. The CLAS tool allowed the artists to paint with light, using a number of different types of lighting in various combinations, like key light and ambient light. With 3D CGI, light is added automatically to objects, but it's trickier with 2D. But with lines, with drawings, the computer needs a certain level of AI to even understand that this line corresponds to this line, and this hand is also this hand. The software tracks movement of the characters so the light and shadows will move with it. The program takes a very educated guess, but it's not 100% accurate, so the artists can go in and fine-tune it by hand. Painting with light allowed the artists to get creative, with details down to the tiniest reflections in their eyes, as you can see here. अब यहाँ पे देखोगे क्लाउड्स की सबसे बड़ी जो एडवांटेज है वो उसकी डाउन लाइट है, जो कि वो हमेशा से जो नीचे से आती है। ऐसे लगता है कि हमारे करैक्टर लाइट्स के ऊपर चल रहे हैं। ऐसे मैक्सिमम केसेस में हमें लाइट ऊपर से आती हुई दिखती है, सामने से आती हुई, साइड से आती हुई, लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें डाउन से लाइट आती हुई दिखती है। वो केस क्लाउड्स के साथ है। The team used lighting not only to make the characters feel more real, but also to help tell the story. For example, when Jesper is handing out papers to the kids like a drug dealer, he's always standing in the dark to illustrate his shady behavior. And when he's exposed at the end of the film by his father, he's the only one standing in the light, while the others are in the dark. Inspiration for detailed lighting techniques came from movies and TV shows.
like using just a sliver of light to illuminate a character similar to this scene in Apocalypse Now. And this scene, when Jesper confronts the bully, was inspired by Breaking Bad. It's important that the backgrounds also look three-dimensional and follow the same lighting pattern as the characters, so they used color keys as a guide. They're quick doodles, you know, they don't have a lot of detail, but they tell you exactly what the light direction is and how it's going to affect both characters and backgrounds. For example, this color key shows how Jesper and Alva will be backlit by the sun coming through the window. And this one shows a progression of how the light will change on Alva as she steps towards Jesper. To make the backgrounds pop and appear 3D like the characters, the animators used several different techniques, such as multiplanes, where you have layers on top of layers to give the illusion of depth. The team created a total of 3,160 scenic layouts for the movie. After they'd merged the characters with the backgrounds, they used a second major step that really gave the 3D characters that intricate detail to bring them to life: texture. With another tracking tool, they used contour, lighting, and motion to add various effects to specific parts of a character. So now you could say, well, I don't want a lot of roughness on the skin, but I want the coat to feel rougher. क्लाउस की अगर आप शेडिंग देखोगे या हाइलाइट्स देखोगे, वो थोड़ी अलग टाइप की होती है। क्लाउड्स में जो है वो ग्रेडियंट टूल को यूज़ किया जाता है, जो ग्रेडियंट हमने पहले भी काफ़ी बार सुन चुके हैं। वो ग्रेडियंट यूज़ किया जाता है और उसके साथ साथ स्मूथिंग यूज़ की जाती है, जो कि काफ़ी अलग अजीब टाइप का कॉन्सेप्ट है। मतलब रियलिज्म को एक अलग लेवल पे ले आता है 2D में। ये आप अपनी वीडियोस के अंदर भी कर सकते हो, लाइट को एडजस्ट कर सकते हो कौन सी तरफ से रखना है, उसकी वजह से आप जो है आपके कलर सही से दिखेंगे। शैडोज़ आप बना सकते हो, फेक शैडोज़ बना सकते हो। जैसे अगर आप एक बॉक्स कार्डबोर्ड बॉक्स ले लो, तो उसमें ऐसे आप काट लो उसके विंडोज़ की तरह, तो आप उसके पीछे एक लाइट रख के यहाँ पे रिफ्लेक्ट करो, तो वो कैसा दिखेगा? वो एक विंडो लगेगी जो पीछे से आ रही है, लेकिन वहाँ पे कोई विंडो होगी नहीं, तो आप उस इफ़ेक्ट को ला सकते हो। For example, they can make them look like an oil painting or a watercolor. These textures are subtle, but if you look closely, you can notice the difference. In the end, the characters looked much more 3D and like a part of their environment, as opposed to looking like stickers on top of an elaborate painting. And that's what throws people off when they say, this is 3D, because it's a volume and it's moving and it has texture. But it's really a combination of the light and the texture that makes that illusion. The final stage is final composition, in which any last-minute details are added to the image, like particles. While the majority of the film followed the 2D process, the animators did use 3D models for some characters and objects, and combined the two seamlessly. And even though these were created using CGI, they were lit the same way as the 2D characters were, by hand. There's things that benefit from being drawn because they feel more organic, and there's, you know, things that are not supposed to look organic. There's things that are supposed to look solid, like wagons and doors and props. And it's really hard to make them feel consistent and solid through drawing. If you look closely, Jesper's wagon is 3D, and so are some of the reindeer. Whenever the reindeers had to do something that was particularly challenging for 3D to look right with the 2D, we just animate the reindeers in 2D, and sometimes we would animate one reindeer in 2D and the rest in the ones in the shot in 3D. Scenes like this chase scene at the end of the film so seamlessly combine 2D and 3D elements that it can be difficult to tell which is which. There was a shot where Jesper lifts a plate cover at one point, and I commented on how good the integration of the 3D plate cover looked with the 2D character, and they said, oh no, that's actually 2D, we just painted it to look like metal. तो आप क्लाउस को देख के एक चीज़ का डिसाइड कर सकते हो कि वो कितनी अलग टाइप की एक मूवी है, जो कलर्स को अलग टाइप से यूज़ कर दी। सैम विद अलादीन था,
जो पुरानी वाली है, और सैम विद क्लाउड्स है। इन दो मूवीज़ को अगर आप ध्यान में रख के, आपको मूवीज़ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इनके बस कुछ सीन्स के फ़ोटोज़ देख के डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया ये हो क्या रहा है उस सीन में, तो आप इसको इजीली टैकल कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है कि ये अचीव करने के लिए आपको हाई एंड हार्डवेयर लगेगा सबसे पहले, उसके बाद आपको स्किल्स लगेंगी। तो ये एक कलर्स और टिंट वाइब्रेंस या आप जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कलर थ्योरी में, उन सब का एक एडवांस लेवल तक सोच रहा है। क्योंकि अगर आप बेसिक लॉज को ध्यान में रखोगे, जैसे कि CGI भी एक टाइप की एनिमेशन ही है। तो मुफासा जो है वो एनिमेशन है, 3D एनिमेशन है, CGI एनिमेशन है, या फिर आप मान सकते हो वो लाइव एक्शन CGI है, लेकिन उसमें भी एनिमेशन है कहीं ना कहीं, और 3D और 2D का मिक्सचर है, लाइटिंग का मिक्सचर है। तो ये सब बातें ना आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आपको रियलिज्म अचीव करना हो। अब लास्ट टॉपिक जो है वो एडवांस कलर यानी ह्यूज़ पे है। अब जो हमारे जो आगे वाले 3-4 कॉन्सेप्ट बचते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे, आज ही कवर करेंगे, पूरी कलर थ्योरी तोड़ डालेंगे भाई। So be prepared to put your color wheel to the side and ignore generic color combinations, because these methods are pretty advanced. Today we're going to explore 3 different clever ways to generate color combinations that work wonders on graphic design projects. The first method is where color palettes are generated based on analogies or associations with concepts, ideas, or other elements. That might sound confusing, but it really isn't, and this method is very useful when you want to evoke specific emotions, a theme, a symbolic meaning through color. And I'm going to walk you through each method step by step on an actual design project so you really understand how they work. So let's say you are tasked with creating the artwork for a website based around mental health awareness, or even to design the website itself. But of course, these 3 methods do actually work on pretty much any design project. Color Analogies method requires that we first pick out emotions to target. And for this website here, the desired emotion is empathy and support. You will probably decide that the website should evoke feelings of peace, comfort, and hope for visitors seeking mental health resources and information. And once you have that research, we then look at how colors are typically associated with the emotions of peace, comfort, and hope. And soon we are actually going to flip things on their head. But in this context, warmer soft colors like soothing blues and gentle pastels are often linked to comfort and understanding, while shades of green can represent growth, renewal, and hope. Of course, this is just an example, but we do go deeper into this. And at this stage, it's best to start experimenting with those color palettes. So begin by selecting a base color. In this case, you might choose a soft, comforting blue as it signifies empathy and understanding. Then, complement this with pastel shades like light lavender or soft pink to represent comfort and compassion. Now these colours can be used for background elements, which creates a gentle and nurturing atmosphere. To inject a sense of hope and growth, add a touch of light green or mint green as an accent colour. Now this colour can be used for call to actions or to highlight important information, symbolising the potential for renewal and positive change. However, here's the complete flip side to all of this. Now, you might actually have determined in the brief that this audience of the website are young teenagers in regard to mental health, and in which case, you might want to increase the saturation away from pastel colors and use things like bright bold orange as a base color. यहाँ पे जो हमें ऑरेंज का बताया है, ये एक मोबाइल ऐप है फोकस इसको काफ़ी यूज़ करता है। उनके टेम्पलेट्स, उनका ऐप लोगो, उनका ऐप इंटरफेस, वो सारा कुछ ऑरेंज कलर और उसके इर्द गिर्द के कलर्स के यूज़ से बना है, और वो एकदम आपको हेल्थ वाला और टीनेजर को, एटलीस्ट मेरे को कैप्टिवेट किया था उसने 1 साल पहले। डाउनलोड करने पे तो मजबूर कर ही दिया था उसके इंटरफेस ने और उसके लोगोस ने। तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है। जो अब बड़े लोग हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, मतलब जो 40s क्रॉस कर चुके हैं वो थोड़े स्टेबल हो जाते हैं। उनको कलर अब जो है वो पेस्टल वाले चाहिए, चाहे लड़का हो लड़की हो, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस आता है। लड़कों को ब्राइट पेस्टल चाहिए होती है, लड़कियों को लाइट पेस्टल चाहिए होती है, वो अलग चीज़ है।
लेकिन वहाँ पे भी आपको एक शिफ्ट मिलेगा कि ऑडियंस जो है आपकी वो कौन सी है, किसको आपने टारगेट करना है, आपका बेसिक जो प्रोडक्ट मॉडल वीडियो वो आप किसको दिखाना चाहते हो। जैसे मेरी वीडियोस अभी आप देख लो, लाइट वाली है, एकदम नॉर्मल रॉ, तो इसमें मैं बिल्कुल कुछ नहीं ऐड करता हूँ। मेरे हेयर जो है वो लाइट की वजह से डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं अभी, जो कि मेरे ऊपर से आ रही है। बाकी बैकग्राउंड की लाइट ऑफ है क्योंकि लाइट चली गई है, और पीछे वाली लाइट है बस, और कुछ खास तो है नहीं है इधर। फिर भी यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट टूल है, ये मैंने वीडियो एडिटिंग में नहीं डाला है। यहाँ पे एक क्या बोलते हैं लेयर है मेरे फ़ोन के साथ, जिसमें मैंने ये फ़ोन अभी अटकाया हुआ है, उधर यहाँ पे लाइट एकदम ब्लॉक कर देता है। तो वही है यहाँ पे, जिस वक्त ब्लॉक हो जाती है इस तरफ लाइट, तो वो ये यहाँ पे ग्रेडियंट टूल साथ दे रहा है मेरे को। अगर आप मैं फ़ोन को घुमा दूँ तो ग्रेडियंट टूल वहीं रहेगा। मेरी शैडो अभी कास्ट हो रही है वो वहाँ पीछे, वो भी मैं दिखा सकता हूँ। अभी लाइट चली गई है तो मेरा ये वाला जो पीछे वाला लैंप था वो भी ऑफ हो गया, उसकी वजह से हमें थोड़ा और डार्क दिखना स्टार्ट हो गया। तो ये सब हो रहा है लाइट की वजह से। अब मैंने हेड लाइट ऑन कर दी है जो ऊपर वाली है, तो उसकी वजह से आप फिर से देखो एटमॉस्फेयर थोड़ा क्लीन हो गया है, थोड़ा ब्राइटन हो गया है। तो ये वाला जो था ये मेरी कलर स्कीम है। मैं सॉफ्ट रखना चाहता हूँ अपनी वीडियोस को, और क्या बोलते हैं लाइट को सॉफ्ट रखना चाहता हूँ, और जो कलर्स हैं मैं पहनता हूँ या मेरे बैकग्राउंड में थोड़े बहुत कलर्स हैं उनको मैं ब्राइट रखना चाहता हूँ, ताकि मैं एक हिसाब से जैसे फिल्म्स में कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि जो डिटेल्स पे ध्यान दिया जाता है उसको कैसे शिफ्ट किया जाता है। अभी मेरे पास फोकस वाला कोई कैमरा नहीं है जो ऑटो फोकस करे या ऐसा कुछ करे, तो मैं नॉर्मली फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो उसकी वजह से क्या है, मैं पूरा प्लेन दिख सकता था, लेकिन लाइट की वजह से मैं 3D दिख पा रहा हूँ, लेकिन जो पीछे वाली चीज़ें हैं वो अभी भी प्लेन दिख रही है। तो उसको अगर मेरे को इम्प्रूव करना है, उनको कैसे दिखाऊँ मैं, तो उसके लिए मेरे को यूज़ करना पड़ेगा कलर्स, काफ़ी सारे कलर्स। इसलिए मेरा ये जो मेरे कर्टन्स हैं वो ब्राउन कलर के हैं, बैकग्राउंड में लैंप ग्रीन कलर का है, पीछे जो वो सामान रखा है वो डिफरेंट कलर का है, मेगुमी का पोस्टर जो है वो रेड कलर और ब्लैक कलर, ये एक कॉन्ट्रास्ट दे देता है मेरे को अलग। क्योंकि मेरा रूम भी पूरा वाइट है, अब मैं रूम को रिपेंट तो कर नहीं सकता इतना सारा सामान निकाल के, या फिर मैं और पोस्टर लगाऊंगा तो वो बहुत केओटिक लगेगा। तो इसलिए मैंने मिनिमलिस्टिक रख के फिर भी सारी चीज़ें को एडजस्ट किया है कि आपका फोकस 2-3 चीज़ों पे जाए बैकग्राउंड की, जिसकी वजह से मेरे एक डेप्थ बन सके बैकग्राउंड। कैरेक्टर में मेरे डेप्थ बन चुकी है, लेकिन जो बैकग्राउंड है उसमें अभी बाकी है। वही चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो मेरी टारगेट ऑडियंस होगी वो होगी 17, 18, 19, 20, 21, 22, इसके बीच में, जो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं भी अभी 12th में आया हूँ, अभी मतलब 2-4 महीने हुए 12th में आया हूँ, तो उसकी वजह से क्या है, मैं थोड़ा अब अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, अलग चीज़ें सीखना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए मेरे को अपने इर्द गिर्द ऑरेंज कलर रखना पड़ेगा जो चेंज होगा मेरे। तो ऑरेंज कलर के लिए मेरे पास अभी वैसे ऑरेंज कलर का सिर्फ एक ये टूल है, ये वाला टूल है, ये एकदम देखो यहाँ पे रखता हूँ मैं, ये एकदम से अलग फील दे रहा है मेरे रूम में। जबकि मेरी जो चेयर थी, ये वाली चेयर है, ये ब्लैक है, जो कि माइंडलेसली यहाँ पे क्या बोलते हैं मेरे कैरेक्टर के साथ समझ हो जाती है, बिना पता है कि ये चेयर है, मैं कैसे बैठा हूँ इस पर पता नहीं चलता है, क्योंकि मेरे को ये चेयर दिखानी ही नहीं है। मेरे को ये ब्लैक कलर अपने वीडियोस में उतना दिखाना नहीं है, इसलिए मैंने इसको डाउन रखा है बिना कुछ ज़्यादा इम्प्रूव किए हुए इसमें। वैसे मैंने अपना चेयर दिखाई है।
अब मेरे जो क्लोथ्स हैं वो भी वाइट है, जो कि एक अलग सी न्यू सी फील देते हैं, प्योरिटी की फील देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे जितने भी हैं, या तो मेरी वीडियो आपको लगेगी बहुत बोरिंग बिकॉज ऑफ माई पैलेट, या तो आपको ये बहुत प्योर लगेगी। तो मैं उसी थीम के साथ जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ प्योरिटी से, जो मैं खुद भी सीखना चाहता हूँ, प्योर होनेस्ट रह के। तो वही थीम में लेके चल रहा हूँ मेरी वीडियोस में भी, सिंपल। Which will trigger a sense of action and change, which helps with positivity and hope. Now you want to think about how emotion reflects on the audience and then choose color palettes in relation to that. And that is the color analogies method, but here are two very crucial bonus tips. Share your design with colleagues, clients, or target audience members to gather some feedback. Their perspectives can help you refine and enhance the color palette. Always keep in mind the accessibility of your design, especially if it's intended for digital platforms. Make sure the text remains legible and the color choices adhere to accessibility standards. Method number 2 really works well on rebranding or branding projects, but you can of course translate these skills over to different projects as well. Now for this example, let's say we're tasked with branding a sustainable fashion label. The concept of the brand is centered around nature, sustainability, and the idea of harmony between fashion and the environment. We can start by analysing the brand's current colour palette, if it's a rebrand that is, and understanding the values and the principles it represents. If it's not a branding project you're working on, then you can look at your competition in a similar niche and apply things from there. Sustainable clothing brands often emphasise eco-friendliness, organic materials, and ethical practices. Consider how these values are reflected in the existing colours. When looking at existing colours in relation to the brand or the niche, you need to ask yourself a few very important questions. Assess which aspects of the existing colour palette might need adaptation. Are there any colours that are no longer aligned with sustainability, or do some colours just feel outdated or not in line with the current design brand? Do you want the design to align with the niche, or do you want to stand out from the crowd, so to speak? For this project, we will consider how the new colour aligns with the environmental associations. Colours such as natural greens, earthy browns, and calming blues often resonate with eco-friendliness and eco-consciousness. But do you actually want to go along with that? We could, and that would be totally fine. But you might determine that the sustainable niche is really oversaturated, and so you might want to steer away from the conventional colour schemes. This is exactly where advanced designers make crucial decisions, and then lower tier or even AI designers fall short. Instead of the pastel earthy tones that we see pretty much everywhere in this niche, we might opt for a sunset orange as the base colour. This vibrant warm colour symbolises energy and change, which leads onto representing the brand's innovative and forward-thinking approach. We could then complement that with ocean blue, and that's a deep blue that evokes the vastness of the ocean and reflects a sense of responsibility towards protecting the environment. That can be accented with either black or white depending. And as you can see, this colour combination would stand out from the crowd in this niche, but it also still fits into the niche at the same time, if assembled and executed properly into the branding project, of course. Now here's a very good tip in regard to rebranding in this colour combination method. Gather feedback from the client and the target audience. Ensure that the adapted colours resonate with the intended audience and effectively convey the desired message. Color combination method number 3 does get really quite advanced, so let's take a look. This is called synesthesia inspired color selection, and it's a creative and an unconventional approach to choosing color combinations in graphic design. This color method actually attributes or associates colors to sensory experience, and that creates an emotionally relatable and effective design. For this one, let's design materials for a jazz music festival. We first want to get a vibe and a feel for jazz music, so research and understand what is associated with jazz in terms of color. For example, jazz might be linked to deep blues and cool purples because they're kind of peaceful and relaxed, while the excitement of a jazz solo might evoke a vibrant red or a fiery orange.
Now, this next step does dive deeply into the senses, and so as a designer yourself, you want to close your eyes and listen to the jazz music. Think about what kind of colours spring to mind when you listen to the music itself. Perhaps a cool blue represents the smooth melodies, while the energetic reds mirror the improvisational solos as previously mentioned. This method for coming up with colour combinations does require the designer is really tapped into the niche and the project, be it food related, whatever it is, or music in this example. But in this jazz example, we want to write down a code or a language in regard to colour, and that might look something like this. Once you have that language, you can begin to consider other aspects such as emotion, audience, and context. Start to build a colour palette for your project, and you may want to base this around a base colour by adding complementary colours from your associations. For instance, you can use fiery reds and oranges as accent colours, and they will represent the excitement and spontaneity of jazz solos. Also, maybe experiment with different shades and tones of these colours to create harmonious palettes. But do ensure the colours create a visual connection to the emotions and unique experience of jazz. The main bonus tip for this method is documentation. Keep a record of the associations you've made between sensory experiences and colours. This can serve as a reference for your project but also future projects. आज के लिए ये लास्ट वीडियो होगी क्योंकि इसमें हम फिल्म्स की टोन पढ़ेंगे, यानी वीडियोस की हमें कौन सी टोन रखनी चाहिए, किस टाइप से उनको हमें अरेंज रखना चाहिए, वो पढ़ेंगे हम। तो बहुत ही सिंपल रहेगा इसका, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है क्योंकि हमने कलर पढ़ लिया जो कि सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ थी। अब टोन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन अगर आपने कलर्स यूज़ किए, आपने अपनी प्रैक्टिस की कलर्स में, तो टोन्स आपको थोड़ी रिलेटिवली इजी लगेंगी क्योंकि कलर्स से थोड़ा सा नीचे ही टोन्स और टिंट्स आ जाता है। अब जो बाकी बचता है सैचुरेशन का टॉपिक आपको एक्सपेरिमेंट से ही करना पड़ेगा। 20-30% कोई भी कलर को कम करो ज़्यादा करो, उससे आपको एक अलग अलग रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। 30% से ज़्यादा आपको ना सैचुरेशन कम करनी है ना सैचुरेशन ज़्यादा करनी है। From the beginning. When we walk out of a movie, we often talk about the way it made us feel. It was depressing, it was shocking, or it was uplifting. Maybe it was simply fun. But the question is, how do filmmakers create these feelings? I'm glad you like my comedic movie. Exactly how I intended. One of the main ways is with tone. Tone in this case literally means brightness. Just look at this Superman. Now look at this one. Same character, but just by turning the brightness way down, the viewer has a completely different emotional experience. You can put it to the test by desaturating any visual, and you can see how bright or dark the scene really is and what kind of feeling that elicits in a viewer. There are 3 ways you can affect visual tone: lighting, exposure, and art direction. Lighting is simply how you light a scene. Do you want high contrast and shadows, or do you want to create an even, low contrast appearance? Exposure is how much light you allow into the camera. You can choose to crush your blacks or blow it out. And lastly, art direction is how much tonal difference there is in your set dressing, props, and wardrobe. Now that we've covered the big 3, let's dive deeper into each. We'll start with lighting. Watch the lighting in this scene from Raging Bull. It starts out evenly lit. Just like every other fight up to this point, we can clearly see both subjects as they pummel each other. As Jake taunts Sugar Ray, he's still well lit, but notice what happens with the lighting in the next few moments. Let's watch that again. In a single shot, the lighting scheme is altered and the tone changes along with it. We see Sugar Ray engulfed in shadows, creating a larger-than-life silhouette. He's monstrous, imposing, dangerous. As the lighting darkens, we brace for impact. Now there are various camera techniques at play here, but the shift in lighting really packs a punch. Next up, exposure. We saw how controlling lighting can create a contrast of brightness. Now let's take a look at how you can do it by adjusting camera exposure.
Take a look at this early scene from The Godfather. This was shot by legendary DP Gordon Willis, nicknamed the Prince of Darkness. Just look at how underexposed the first shot of the movie is. Don Corleone is barely a silhouette, and now he's revealed in reverse. And his eyes, those windows to the soul. The dailies for The Godfather were so dark and underexposed that the executives at Paramount began to worry. This is a scene about how The Godfather deals in violence and death. But the slivers of light through the windows are blown out because outside, his daughter is getting married. A traditional family out in the light, in public, and the mafia behind the scenes cast in shadow. At this early point in the story, Vito, Sonny, and Tom are all inside the darkness, but Michael is outside with his girlfriend Kay, bright and properly exposed, uninvolved with the family business. That's my family, Kay. It's not me. This shows us their visual and thematic contrast to the rest of the Corleones. Throughout the film, we watch as Michael descends into darkness both in terms of plot and in terms of brightness, until he finds himself here. The Godfather is a masterclass in using the tool of exposure to manipulate brightness to tell the story. Third on our list, art direction. You can also control the brightness and feeling of a scene using props, set dressing, and wardrobe. Take a look at how The Matrix plays with brightness here. The scene is a bright white setting, but it's in immediate contrast with Neo and Morpheus's dark wardrobe, and even when set dressing is introduced, the shades are darker. Later in the film, when Neo needs guns, Lots of guns. the black and white art direction create tension. Now let's look at how Kubrick used contrasting tones within art direction for The Shining. Here, Jack is sitting at the ballroom bar. His frame is populated by darker elements. Dark tables, door trims, even his outfit has darker tones. Now see the contrast when we cut to reverse. It's a totally different set design. Kubrick frames the ghostly bartender in light to seduce Jack into the evil world of the Overlook Hotel. And that light is justified with art direction. So to recap, you can control the feelings of your scenes by controlling the brightness. But what happens when you throw conventions on their head, perhaps to create irony? I mean, really? Ready? I guess so. Neat. We'll start tomorrow. The Coen brothers are masters at contrasting brightness with emotional tone. Here it's a bright day, flatly lit, and then this guy shows up, dressed all in black. The wardrobe and art direction here are practically screaming he doesn't belong here, he doesn't fit, and then he goes and does something like this. The Coens also do the opposite. They'll set comedic moments against darker lighting and moody atmosphere, making us laugh when we perhaps shouldn't. The end effect? Dark humor. So here are a few tips to get you thinking about how you might use tone. First, plan out what type of tonal range you want. Is the story going to be dark or bright? Are there any pivotal scenes or moments you want to contrast from the rest of the film so you can draw attention to them? Storyboard with these things in mind. It'll help you convey the emotions each scene requires. And also think about it when you're creating a script breakdown and you're plotting out the lighting and art direction requirements. तो बेसिकली इस वीडियो में हमें टोटली क्या क्या पता चलता है, टोनल रेंज के बारे में पता चलता है कि अगर आप टून एक जो हमने पहले कलर में भी बताया था मोनोक्रोमेटिक स्कीम वाले, जो हमने पहले कलर्स में भी बताया, अब वो वैसा टून में भी हो रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइप की टून रख सकते हो, इसमें भी आप कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, वो सब कुछ फॉलो कर पा रहे हो। लेकिन अगर आपने एक ही थीम रखी हुई है, आपने एकदम से अलग सा कलर ले आया है, जैसे हमने अलादीन की मूवी में देखा था पुरानी वाली में, उसमें हमें जो वो क्या नाम है टर्कोइज कलर या इंडिगो टाइप का कलर वो दिखाई देता है एकदम क्लाइमैक्स वाले सीन्स में, वो पूरी मूवी में और कहीं नहीं दिखाई देता है। वो क्या है, एकदम शिफ्ट है, वो पूरा अल्टर कर देता है हमारे ऑडियंस का पर्सपेक्टिव कि अब मूवी एंड होने वाली है, वहाँ पे हमें पता चलता है थोड़ा थोड़ा। और यही मेन चीज़ है, इस पे हमें ध्यान देना है, वहाँ पे भी हम मतलब अटेंशन ले जा रहे हैं उस कलर की वजह से उस चीज़ पे। तो ये जो टोनल रेंज है वो आपकी पूरी मूवी की रेंज हो सकती है, जैसे अलादीन में रेड ब्लू येलो वाली थी, और क्लॉस में जैसे लाइटिंग की थी, वार्म लाइट, वाइट लाइट, उसमें डार्क लाइट में उस टाइप की थी। और ब्लेड रनर में हम कलर्स के साथ ये चीज़ देखते हैं। वैसे ही अगर आप ध्यान दो ओपनहाइमर में,
ओपनहाइमर में जो ब्लैक थीम है वो टून है उसकी, और ब्राउन थीम वो उसकी टून है। जब भी सीन को अल्टर करना होता है, बिल्कुल चेंज करना होता है, तो थोड़ी वाइट ग्लो आ जाती है। वैसे ही जो इन्होंने एग्जांपल दिया है, मैट्रिक्स वाली एग्जांपल, कि बैकग्राउंड एकदम वाइट हो जाता है, वो एकदम अलग आता है। पूरी दुनिया पहले रियलिटी वाला चल रहा था, रियलिटी लग रही थी उसको, नियो को वो पूरा रियलिटी लग रहा था। फिर उसका एकदम मूड शिफ्ट हो गया वाइट की वजह से, एकदम उसको एक नई चीज़ मिली। अब वो प्योर हो चुका है उस दुनिया से, क्योंकि उसको पूरी चीज़ें पता चल चुकी हैं उस दुनिया की, कि वो एक मैट्रिक्स में फंस चुका है। तो जब वो उस मैट्रिक्स से बाहर आता है अपनी नेक्स्ट मूवीज़ में, तो वहाँ पे डार्क थीम आ जाती है। अब असली वर्ल्ड कैसा है वो उसको दिखाई देता है। तो ये जो टोन का शिफ्ट है, ये हुआ है वाइट की वजह से। वो जो बीच में अल्टर वाइट रेंज की थी उसकी वजह से हुआ है। अगर मूवी को आप सीधा रियलिटी से डार्क में ले जाते हैं, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। अब आप इंटरमीडिएट लेवल तक कलर थ्योरी में पहुंच चुके हो। इसके नोट्स वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगी। तो इसको बेसिकली आपको अच्छे से देख लेना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट में मेरे को आप लिख लें, #Q करके आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। तो उसकी वजह से मेरे को क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे, उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। कोई अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। हाँ, अगर कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक हुआ जो कि काफ़ी बड़ा हुआ, तो उसमें मैं पहले वीडियो बनाऊंगा, फिर उसी कमेंट के नीचे मैं आपको उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो अभी के लिए कलर थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब प्रैक्टिस करना आप अगर शूट नहीं कर सकते हो अभी वीडियोस, तो आपको रॉ फुटेजेस मिल जाएंगी यूट्यूब के ऊपर ही। आप उनको डाउनलोड करो, उन पे प्रैक्टिस करो, कलर ग्रेड करो, या ड्राइंग कर रहे हो, अगर आप एनिमेशन कर रहे हो उसमें प्रैक्टिस करो आप। या फिर कलर थ्योरी को अगर आप और लाइव में प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप कभी भी अगर बाहर घूमने जा रहे हो, बोर्ड्स को देखो, उनको एनालाइज करो, वहाँ पे वो वाला कलर क्यों चूज़ किया गया है, ऐसा सोचने की कोशिश करो। उसकी वजह से आपकी कलर थ्योरी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर मेरी और वीडियोस देखनी है तो जो अभी डिस्प्ले पे आ रही है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उस वाली वीडियोस को देख सकते हो। वो भी कलर ग्रेडिंग के रिलेटेड है। जैसे आपका टीचर होता है ना 10th तक का, वैसे मैंने समझाया ये सारा कुछ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। आप चलो ठीक है।